Hello, and welcome to Pakistan's first cricket fan channel. मेरा नाम है हमजा और आप देख रहे हैं PCFC पाकिस्तान क्रिकेट फैन चैनल. If there is anyone with us who wants to watch along, please do comment your thoughts in the comment section and let us know what are your thoughts on the match, who's going to win, and we're going to talk about everything that is going on behind the scenes. क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान की और क्या स्ट्रैटेजी होगी इंडिया की. और जैसे हम लाइव आज का कर रहे हैं तो लाइट चली गई है और हम गर्मी में बैठे हैं यहाँ पे. कमेंट करिए, ठीक है, वीडियो चेक करें, कमेंट करिए जरा, यहाँ पे कमेंट आते हैं. कमेंट किया? Oh, आता है. Hello Zulfikar, thank you for joining us. Hello, big hello to you. Okay. I'm sure कोई ना कोई तरीका होगा, बट हमें ऑडियो मिक्सर यहाँ पर आ रहा है. Guys, if you have any predictions on who's going to win the match, please do write it down in the comment section. We are waiting for your comments. Can you guess if I am supporting Pakistan or India? Let me know what you think. इंटरेस्टिंग थिंग इज गूगल पे एक विन प्रोबेबिलिटी आती है, वो इंडिया को 62% और पाकिस्तान को 38% प्रोबेबिलिटी दे रहा है.
looking at the squads of Pakistan and India, one thing that you may notice is that India, even though is strong in terms of their batting, but with bowling they have very inexperienced fast bowlers. So Pakistan, especially our openers, Rizwan and Babar, can take advantage of that. We'll also see. This is how Google is putting it. Okay. The world's biggest game is on the cards as India take on Pakistan in the second of the 2022 Asia Cup. It is revenge time for India to heal the wounds from a 10-wicket defeat at the ICC World T20I last year. Since their exit from the T20 World Cup, India have been dominating in this format. They have won 19 of their 23 last T20I games. So India is definitely the team in form. फॉर्म में जो टीम है गोइंग इनटू दिस मैच इंडिया, दे हैव वन 19 और 19 मैचेस जीते हैं 23 मैचेस में से अपने लास्ट सिंस देयर डिफीट टू पाकिस्तान. India have tried various mix and match strategies with their opponents, but KL Rahul जो इनका ओपनिंग बैट्समैन है, जिसको शाहीन शाह अफरीदी ने इन स्विंगिंग कराकर आई थिंक बोल्ड किया था उस मैच में, KL Rahul is more likely to feature alongside skipper Rohit Sharma over the top order. Indian team की generally left-handed जो बैट्समैन होते हैं उनके खिलाफ इनकी वीकनेस जनरली है. तो हमारे पास इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट आर्म सीमर कोई भी नहीं है. डेफिनेटली एज अ कंटिजेंसी आई फील पाकिस्तान टीम ने एक ट्रिक मिस की है. They should have had a left arm seamer, और आपके आई थिंक डोमेस्टिक सर्कल में काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं. मोहम्मद आमिर और जुनेद खान, आई एम नॉट श्योर जुनेद खान कितना फिट है, उसके यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, लग तो ठीक रहा है, बट किसी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को चांस देना चाहिए था. और यंगस्टर्स में से भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे होंगे लेफ्ट आर्मर्स जो लेफ्ट आर्मर राइट आर्म बॉल बैट्समैन के खिलाफ अगर बॉल अंदर लेकर आ सकता है, एक उसकी नेचुरल बाहर जाएगी, और लेकिन अगर अंदर ला सकता है तो बहुत ज़्यादा राइट आर्म बैट्समैन को इशू होता है. ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है फ्लिंच, मुझे याद है वर्ल्ड कप में जो मैच पाकिस्तान हारा था उसमें आई थिंक बता रहे थे उसका बड़ा ही कोई अच्छा रिकॉर्ड था लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ, और उसके बावजूद आई थिंक शाहीन ने उसकी विकेट ली थी उस मैच में. सो again, someone who can bring the ball in, especially the left armer who can bring it into the right armers, it's very difficult to play. और इंडिया की एक weakness known है, so we might have missed a trick over there, but that's okay. So yes, KL Rahul for with skipper Rohit. A worrisome batter for Pakistan will be Surya Kumar Yadav, who has scored 428 runs in 12 innings in this year and is the world's number 2 20I batter. Number 1, I'm guessing, is our very own Babar Azam. Jasprit Bumrah is out with injury and Bhavesh Kumar. Bumrah is their top bowler, fast bowler, accurate, वेरी डिसेंट बॉलर ऑनेस्टली. अगर आपको याद हो फ़खर ज़मान को इन्होंने नो बॉल पर आउट किया था इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल दैट पाकिस्तान एंडेड अप विनिंग, एंड दैट वाज अ बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान. लीडिंग विद एन इंजरी, विल बी लीडिंग द इंडियन पेस अटैक along with Avesh Khan and Ardeep Singh. Bhaveshwar Kumar, we've been seeing this bowler for a very long time. Not very pacey, swings the ball a little bit with the new ball, but अगर आप swing read कर सको तो it's not very difficult to play. He's a bowler who can leak a lot of runs. आवेश खान और अर्शदीप सिंह का भी मैंने चेक किया, सो इनके फास्ट बॉलर्स बिल्कुल भी थ्रेटिंग नहीं है. जिस तरह हमारा हारिस राउफ
Dhani, or even Hassan Ali to some extent in the middle overs can come in. So they're very aggressive bowlers. Naseem Shah again, पाकिस्तान का ये कि बॉलर्स कराते हैं तो पूरी जान से पूरी पूरी बॉल मारते हैं जब and when they leak runs, they leak a lot of runs, but we are always on the hunt for wickets. So Pakistan does have an advantage in the fast bowling department at least. See if India goes with Jadeja और दिनेश कार्तिक. जो बातें चल रही हैं उसमें चल रही है जडेजा को खिलाने का इनका इरादा है, कार्तिक को ड्रॉप करने का इरादा है, जो इंडियन मीडिया या इंडियन जो पंडित्स हैं वो ज़्यादातर कह रहे हैं. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब व्हेन द टाइम कम्स. I wonder अगर ये ब्राउजर मैंने आप चेक कर रहे होंगे towards the right of your screen, I wonder if I would have to keep on refreshing it for you to get updated. But I can also hide it when I like, so that is very cool. I can also add screens over here. So one screen that I would like to add again is, we'll probably do that later. But yes, it will be interesting to see if India go with Ravindra Jadeja or Dinesh Karthik. I think they would go with Jadeja. Again, I think one thing that आपने भी नोटिस किया है कि जडेजा के बारे में, जडेजा इज अ टैलेंटेड बैट्समैन, बट अगर वो प्रेशर में डाला जाए और उसको बना हुआ मैच खेलना आसान है, आई थिंक अंडर प्रेशर he does not necessarily perform well. So वो इस तरह का प्लेयर है जो प्रेशर ले लेता है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन पर्सनल है. On the other hand, Pakistan will be ready to take the challenge with Babar Azam and Mohammad Rizwan opening the. Rizwan hasn't been in the best of forms. I hope he finds form, because if both of these click, they give you a stable opening partnership, जिससे बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा आगे गेम करने का. India will have to put up a strong bowling show to ally the world's number 1 and 3 T20 batters. So Rizwan and what's his face, Babar Azam are number 1 and number 3. Babar being number 1 and number 3 is Rizwan. A big threat for Pakistan is that they will be without their leading pacer Shaheen Shafri due to injury. Again, having a left arm seamer and someone like Shaheen, who has put all batsmen in the world, all top batsmen in the world, in trouble with especially his first spell. He's very good with his first spell, so we will definitely miss, and hopefully he recovers for the World Cup, which is going to be in Australia. And Mohammad Wasim is also out because of a back injury or back pain. Khan is coming away the mother, and it is called the mother of all battles. So right now, अभी तक I think toss नहीं हुआ. Toss would be expected half an hour before the game. That would be, I believe, 6:30 Pakistan time.
Sorry for the delay, guys. We are back. Um, Let me know what you think should be the ideal 11. What do you think should be the ideal 11 for Pakistan to start? Ladies and gentlemen, this is PCFC, Pakistan Cricket Fan Channel. This is a new channel that we have started, and hopefully, you guys will like it. We will be doing watch along, so we will be watching the game with you. This is our first show, so not very high production value, but I hope you guys enjoyed. I've been a cricket fan all my life. I've been a Pakistan team fan all my life. Grew up watching legends like Wasim Akram and Waqar Yunus. The first World Cup that I vividly remember is the 99 World Cup, जिसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारी थी फाइनल में. बहुत 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 दिल टूटे थे, and there was a lot of controversy around that World Cup, but it was a very very strong Pakistan team at that time. You had Wasim Akram, Waqar Yunus, Shoaib Akhtar, Azhar Mahmood, Abdul Razak, Saqlain Mushtaq, Mushtaq Ahmed, all making the rounds in the team. Very strong bowling lineup. Then Saeed Anwar, Vijatullah Basti एक player होता था, Shahid Afridi, Mohammad Yusuf at that time, Yusuf Johanna I believe, Inzamam ul Haq, Salim Malik, Moin Khan, Rashid Latif was also in the scene at that time. So we had a very very strong squad, and that was, I think 99 was Pakistan's World Cup to lose. I think Pakistan was definitely सबसे ज़्यादा strong team थी उस World Cup की, और उसके बाद Australian domination आई in the world of cricket through Australia, where they won I think back to back 3 or 4. They uplifted the level of the game altogether with fielding और उसके साथ अपनी fitness के साथ. And let's see क्या होता है. Twitter पे क्या trend कर रहा है? Naseem Shah for some reason is trending on Twitter. Maybe he has been. Oh, so Hassan Ali handed Naseem Shah his T20I debut cap. So congratulations to Naseem. I think that means that he will be playing. I'm not sure कि अगर अभी तक starting वो announce हो चुकी हैं for Pakistan versus India. Everyone on Twitter seems to be very very excited. So right now, from what I can tell, Bismillahirrahmanirrahim. I play a lot of cricket. As a team, we play a lot. Personally, because we play PSL a lot there and international cricket. When we didn't play home series in Pakistan, we play here. So we have experienced a lot. But you know that every time, new day, new game. So अगर आप सुन रहे हैं तो शादाब का इंटरव्यू चल रहा है in the background. You know the Pakistan-India game is always a great fun. Recently performance was very good, but it was history, a new day, new game. So also let's quickly have a look at Pakistan's squad. So if we can add.
Pakistan. Now let's see the squads. Pakistan. Kind of disappointing that one of Pakistan's latest squad. Pakistan squad. Okay. If you guys can see, this is Pakistan's squad for the Asia Cup, and fans have started, and soon I believe there will be the toss. They're doing the pre-match. So, update, breaking news. Rohit Sharma and India have won the toss. That is what will bring you games. I mean, having played here for a few years now, the IPL, the last year's World Cup, I thought having scored in front of us will be a good option to go. Pitch has some grass covering, so hopefully we can exploit that initially. Some very tricky selection. So matters India are is what bowling is first. From what I can tell, India will be bowling first. So that's going to be Really easy. interesting. There was only one call that we had to take between Dinesh and Rishabh. Rishabh unfortunately misses out. We're going to go with Dinesh Karthik. And then Avesh obviously makes it as a third seamer. And it's a question that has been asked a million times. I've got to ask it again. India-Pakistan. It's an international match with a slightly different flavor, I guess. तो पाकिस्तान इंडिया गेम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, बट जो ये सारे बात करते हैं अब इनके लिए एक प्रोफेशनल गेम भी है. आई थिंक प्लेयर्स जितना मर्जी कहते रहें कि नहीं इट्स जस्ट अनदर मैच. इंडिया पाकिस्तान जब होता है सो अगर आप फुटबॉल भी देखते हैं तो डार्बी मैचेस जो होते हैं और जो पुराने राइवल्स के साथ मैचेस होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस होती है. चाहे जितने मर्जी आप प्रोफेशनल हो जाए, हर प्लेयर
कोचिंग स्टाफ और फैंस, इन सारों की कोशिश होती है बड़ा मैच ना हारें या बड़े मैच में डेफिनेटली जीतें. सो जितना मर्जी आप सारे ये प्लेयर्स कहते रहें इट हैज़ बिकम अनदर मैच फॉर अस, इट इज़ स्टिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड लेट्स सी क्या होता है. बाबर लुक्स वेरी हैप्पी. इट्स गुड टू सी बाबर स्माइलिंग. I'm sure he might have also batted. So the thing with chasing is, and why I think Kohli also, Kohli कह रहा हूँ, Rohit Sharma also went for the chase is कि आपको अगर टारगेट पता है so you can plan out accordingly. So what happened with, अगर आप लोगों ने पिछला मैच देखा हो श्रीलंका और उसका अफगानिस्तान को, तो मैंने नहीं देखा, स्कोर देखा था, श्रीलंका got out very cheaply. So जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो स्पेशली तो आपको नहीं पता होता कितने रन अच्छे हैं और कितने रन का टारगेट देना चाहिए. सो दैट इज आई थिंक वेयर दे विल बी एट सम सॉर्ट ऑफ एन एडवांटेज. All the best, Baba. So there is the news from the centers. India won the toss and they elected to bowl. सो इंडिया हैव वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बोल. इंडिया ने टॉस जीत लिया है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है. लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर देम. एक और अपडेट जो वहाँ से दुबई से यूएई से बातें हुए चल रही है, ड्यू फैक्टर नहीं है इस दफ़ा. सो आप बैटिंग करें या बॉलिंग करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. जो पिछला आपका हुआ था वर्ल्ड कप जो यहाँ पर होस्ट हुआ था यूएई में, वहाँ पे ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था. तो जौन सी टीम बैटिंग सेकंड करती थी उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज था. आई थिंक अराउंड 90% गेम्स बैटिंग सेकंड वाली टीम ने जीते हैं, स्पेशली सारी जो बड़ी टीमें थी. तो उससे आई थिंक पहले जो इस एक कहते थे कि जी क्या नाम लेते हैं ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होगा, तो इस दफ़ा नहीं होगा. सो दैट मेक्स द मैच आई बिलीव इवन मोर इंटरेस्टिंग. एंड I'm just a bit disappointed that I do not know a lot of Indian players anymore. Haven't been watching. Was just waiting for this moment to come. I was just looking at the recent form and your returns as a batter. It's been phenomenal. That you batted at number 5. ये वो यादव बैट्समैन है जो कह रहे हैं बहुत अच्छे फॉर्म में है. Let's see how he does. I think a lot of Pakistanis like me will be watching him for the first time. Looking at our batting order, it's like you got to be a little flexible. You should be batting at any position. I am really flexible. I can bat at any number. I've given that flexibility to the management. And about my batting, I think I've been really enjoying what I do. The preparations have been really good in the net sessions, putting pressure on myself, so it gets a little easier when I go in the game. And India-Pakistan these days doesn't come along as frequent, so you must be really keen, especially for this game. Absolutely, I think looking from outside, the rivalry has been great. But at the end, I feel it's just another game, so you just got to be out उन्होंने there. भी and जस्ट अनदर गेम वाली बात फिर से की है. सो हियर इज़ द अपडेट गाइस. पाकिस्तानी स्क्वाड से आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ जो आई थिंक प्लेइंग 11 अब हमारा अनाउंस हो गया. लेट्स गो थ्रू द प्लेइंग 11 एंड सी हाउ मच ऑफ अ फैन आर वी ऑफ द प्लेइंग 11. So this is going to be Pakistan. Babar Azam, Rizwan, Zaman, Iftikhar, Khushdil, Asif, Nawaz, Shadab, Naseem, Rauf and Shahnawaz Dhani, I believe. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here is Pakistan's playing 11. Pakistan की playing 11 ये हुई. Presenting Candyland Biscuit. Chocolate coated crunchy biscuit with caramel inside. This is Candyland going to be Biscuit. Have it Pakistan's all. Biscuit was not slow. opening lineup. It's going to be Babar Azam, Mohammad Rizwan, Fakhr Zaman, Iftikhar, Khushdil Shah, Asif Ali, Mohammad Nazar Nawaz, Shadab Khan, Naseem Shah, Haris Rauf and Shahnawaz Dhani. I'm very happy that Shahnawaz Dhani is getting opportunity. He is someone that we PSL में बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था. एक कैरेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा लगता है कि अपने दिल के साथ हार्ट के साथ खेल रहे हैं.
So that is always fun to see and have as a personality उनको field पे देखने का I think एक बड़ा interesting view होएगा. Haris Rauf is our fast bowler. He's going to probably open the bowling with Naseem Shah. So we have 3 good fast bowlers in the team. Shadab, right hand leg spinner, I think is very important. Performs well in big games, I believe. Mohammad Nawaz is left arm off spinner, also can bat. Asif Ali is coming in as a power hitter. Khushdil Shah is also great batsman. इफ्तिखार अहमद को दिया था, मेरे भी उसमें था लाइनअप में कि या इफ्तिखार अहमद खेलेगा या हैदर अली खेलेगा. तो इफ्तिखार अहमद बेस्ड ऑन आई थिंक एक्सपीरियंस एंड आल्सो कैन बोल राइट आर्म ऑफ स्पिन भी करते हैं, शायद इसलिए बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा रखी हैं, वो दिया है. एंड टॉप आपका जो 3 है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो बाबर, रिजवान, फ़खर जमान इन द बॉलिंग लाइनअप. यू जो बॉलर आप मिस कर रहे हो मोर सबसे ज़्यादा वो आई थिंक आप करोगे अपने लेफ्ट आर्म चीते को, शाहीन शाह अफरीदी को. इंडिया की जो लाइनअप है ऑन द अदर हैंड अगर हम देखना चाहें, सो दे आर प्लेइंग रोहित शर्मा. I can click on this. I wish that it was that easy, but cannot. So it's going to remain where it is. बट इंडिया की लाइनअप है जी रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव जो बैट्समैन की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही. दिनेश कार्तिक वुड बी बिहाइंड द विकेट बिकॉज दिनेश कार्तिक इज़ अ सीजन्ड क्रिकेटर, काफ़ी देर से अभी खेल रहे हैं, 37 year old, so he must have made some kind of a comeback in the team for Dinesh Karthik. He is काफ़ी पुराने हैं, ओपन करते थे टेस्ट मैचेस में काफ़ी ज़्यादा, बट अब हिटिंग वगैरह देखनी पड़ेगी कि कैसे करते हैं. इनका जो T20 आई में जो स्ट्राइक रेट 132 से खेलते हैं इन IPL और 140 हायर स्ट्राइक रेट और 28 की एवरेज, विच इज़न्ट बैड एट ऑल. बट विल ही ओपन द बैटिंग? आई बिलीव ही ओपनिंग पर आते थे, बट आई थिंक केएल राहुल और रोहित शर्मा इनकी तरफ से ओपनिंग करेंगे इंडिया की तरफ से. ओके, सो रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली इज मेकिंग अ कमबैक. अ लॉट ऑफ आइज ऑन विराट कोहली. ही हैजंट हैव 1.5-2 years उनके कोई इतने अच्छे नहीं गुजरे, आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं. केम आउट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ टेकिंग अ ब्रेक, मेंटल हेल्थ ब्रेक प्रॉब्लली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आई गेस अच्छी बात है जो उन्होंने की है. लेट्स सी हाउ ही कम्स बैक इनटू फॉर्म. ही वेरी टैलेंटेड बैट्समैन. आई रिमेंबर एक टाइम पर विराट कोहली सबसे ज़्यादा इनका डेंजरस बैट्समैन होता था क्योंकि रन करता था, तेज़ करता था, चांस नहीं देता था. विराट कोहली की अगर कोई वीकनेस है एक लेग स्पिन, जो आई फील बाबर आजम की भी वीकनेस है, और आउटसाइड एज बॉल गोइंग अवे फ्रॉम हिम, उस पर अक्सर इनका ना विकेट निकलता है. अगर आपको याद हो इन दैट चैंपियंस ट्रॉफी मैच, आमिर ने पहले स्लिप पर कैच किया जो ड्रॉप किया था. आपके एक्स कैप्टन टेस्ट क्रिकेटर क्या नाम था इसका यार, किसी को नाम याद आ रहा है तो मुझे बता दें. और उसके बाद फिर पॉइंट पे शादाब ने कैच पकड़ा था. अभी दिमाग में नाम आया था, फिर से चला गया दिमाग से. बट लेग स्पिनर टर्न बैट्समैन, 1 down 2 down आते हैं आपके उसमें टेस्ट फॉर्मेट में. काउंटी शाउंटी भी खेली थी, कैप्टन भी कर रहे थे टेस्ट टीम बिफोर बाबर आजम वॉज. सो यस, विराट कोहली, फिर यादव who supposedly is in very good, Karthik Pandya is also. So overall Indian team is in good form, but Pakistan, because they're batting first, India chose to bowl and won the toss. So I hope we can take advantage of इनकी अगर वीकनेस है इंडियन टीम की, लाइक हिस्टोरिकली इंडियन टीम्स की रही है, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, और स्पेशली फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में इतना मुझे इनका बाइट नहीं लग रहा, कोई वो नहीं लग रहा चीज़ जिससे ये स्पेशली कोई बहुत ज़्यादा कमाल कर सकेंगे. Let's also see commentary में क्या चल रहा है.
So this is our first live. We are PCFC Pakistan Cricket Fan Channel, and this will be our first live session. We will upgrade the quality and the user experience when they watch our channel. This is our first channel, so if you are joining us, thank you so much. Please stay in tune. Watch this match with us in our watch along, Pakistan versus India, ladies and gentlemen. And let's see कि जब अभी आपको मैं लेटेस्ट अपडेट देता हूँ व्हाट्स हैपनिंग. सो पाकिस्तान, बाबर आजम ने भी अपने टॉस में कहा कि पहले बॉलिंग करते हैं वो, लेकिन टॉस ऑब्वियसली इज़ नॉट इन देयर हैंड्स. बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे. 3 सीमर्स विच आर धानी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह जिनके साथ हम खेल रहे हैं, एंड playing 2 spinners. Naseem Shah is making his debut. Hassan Ali gave him his cap. 2 spinners में आपके शादाब और नवाज फुल टाइम, और फिर आई थिंक खुशदिल भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं, और इफ्तिखार भी आपके पास हैं जो राइट आर्म ऑफ स्पिन कर सकते हैं. Mentioned there are some new faces and old faces in Indian team. However, they will give their best. रोहित शर्मा का ठीक था. खुशदिल शाह भी कर लेता है, आई थिंक लेफ्ट आर्म. इफ्तिखार अहमद भी कर लेते हैं. बॉलिंग ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं. 3 फास्ट बॉलर्स होने से एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट एक टीम में बिल्ड होता है कि एग्रेसिव फास्ट बॉलर्स खेलना इतना आसान नहीं होगा. फिर स्पिनर्स को अटैक करना पड़ेगा, एंड फास्ट बॉलर्स कैन क्रिएट प्रेशर बाय आइदर टेकिंग विकेट्स और नॉट गिविंग अवे टू मेनी रन्स. फिर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, स्पेशली राइट आर्म लेग स्पिनर को, कि जब उस पर चांस अगर लोगे तो फिर विकेट देने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है. सो वो भी हम देखेंगे. हाउ डज इट पैन आउट. राइट नाउ द टाइम इज 6:45, so in another 15 minutes we shall be live. What is my prediction for the match? क्या prediction है मेरी मैच के लिए? बहुत मुश्किल है कहना. T20 मैच है, दोनों तरफ जा सकता है. आई होप कि मैच अच्छा हो. Want पाकिस्तान टू विन. पाकिस्तानी टीम अच्छी है. अगर आज शाहीन खेल रहा होता तो आई वुड हैव गिवन पाकिस्तान अ बेटर चांस टू विन दिस गेम. अभी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा 50-50 है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडियन टीम में मुझे कोई इतनी वो नहीं लगी. अनबीटेबल नहीं है, ना ही पाकिस्तानी टीम अनबीटेबल है आज. पाकिस्तानी टीम की वीकनेस मैं बताता हूँ कि इंडियन टीम की वीकनेस डिस्कस की, पाकिस्तान टीम की वीकनेस भी डिस्कस करते हैं. ये आप लाइनअप आपके सामने इसमें आप देख रहे हैं. जिस तरह यहाँ पर बाबर रिजवान ठीक है, ये फ्रॉम आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, शादाब खान, इवन मोहम्मद नवाज, ये जो आपका सारा सेक्शन है जिसको आप मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर कहते हो, यहाँ पर वीकनेस है. यहाँ पर आपके पास 2 वर्कहॉर्स, 2 आपके पुराने एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स हफीज़ और शोएब मलिक होते थे. शोएब मलिक, हफीज़ दोनों बहुत अच्छा स्पिन को भी खेलते थे, सो मिडिल ओवर्स में उनका बहुत ज़्यादा वो होता था. इंडियन स्क्वाड भी उन्होंने अब आई थिंक अपडेट किया है, तो वो खुद ही रिफ़्रेश हो गया है. Let me refresh this once again. चेक करते हैं कौन सा स्क्वाड आता है. सो इंडिया का जो स्क्वाड है ऑन दी अदर हैंड, दैट इज KL राहुल, रोहित शर्मा, I don't know who this guy is, Iyer, right hand batsman, Yadav, Kohli, Akshar Patel, and all these people. I think it's the entire squad. This is not the playing 11. Regardless, let's see what happens in the game today. Because of the floods, there's a lot of sadness, there's devastation. So many lives have been lost, unfortunately, and if anyone is watching, they should definitely contribute in whatever way possible. So it's going to be a positive for the nation overall if Pakistan can bring some glimmer of happiness to our country. छोटा मुल्क है, हम इतना बड़ा मुल्क नहीं इंडिया की तरह, तो ज़्यादा एम्पलीफाई होती है वो खुशी हमारे लोगों में.
नॉट सेइंग कि इंडिया वाले अपनी क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, बहुत ज़्यादा उनको भी अपनी टीम से प्यार है और बहुत इमोशनल है वो भी क्रिकेट के बारे में, बट आई फील I think it's going to lift the nation up just a bit, this victory, if it happens. Let's see if it happens. So that's also very important. Anything you'd like to say, you can leave it in the comments section. Let's see if there is anyone who ever joins our live stream. I can be saying whatever I want without being too worried about So just almost 10 minutes to go. Super excited about that. मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड भी हूँ दुनिया से कि मेरा फ़ोन यूज़ हो रहा है एज अ वेबकैम. This is the first time I'm doing a live streaming thing, so I hope I'm doing well. Okay, so guys, we are live with Pakistan versus India, and we are very happy to get the match started. So less than so just 5 minutes to go. I think the teams have made their way onto the ground. Coin toss हो चुका है और पाकिस्तान टॉस जीत चुकी है, so that is definitely good news for Pakistan. I am super excited about this game. It is Pakistan versus India, so
एक्साइटमेंट तो बनती है. लेट्स सी कि आगे गेम में क्या होता है क्या नहीं होता, बट hopefully Pakistan jeets it. I'm very excited to see Dhani in action today. So the people I'm looking forward to seeing is Fakhr and Rizwan, how they perform, because Babar hopefully does well. Even inshallah he will do well. Iftikhar is experienced in the domestic circuit as well. He needs to prove himself. Khushdil is, I feel, is very talented. Asif can come in with the big hitting. Nawaz is a decent batsman. He's not so great, but he's a decent batsman and also gives you that left arm option. Shadab ka bhi same cheez hai. 20, you can expect around 15-20 runs in quickly from these guys if the bowling isn't too hard, isn't too tough, especially on these pitches. अगर under pressure वगैरह नहीं है, game में dominance. And also एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि जब भी क्रिकेट या कोई भी गेम होती है, एनर्जी उस टाइम पर, प्लेज उस टाइम पर, स्विंग इन I think it's the players are walking onto the field. I'm not sure if they're still doing national anthems. I think the entire, I think everyone is walking on. So national anthem होएगा, पहले पाकिस्तान इंडिया का national anthem होएगा, then the game will begin. Right now, as we speak, the time is 6:54 p.m. and hopefully. एक सी ऑफ ब्लू. सो इंडिया जहाँ पे भी खेलती है वो मोर और लेस उनका होम ग्राउंड एडवांटेज होता है. अभी भी अगर आप क्राउड देखेंगे, पॉकेट्स ऑफ ग्रीन सपोर्टर्स बट अ लार्ज ओवरऑल ओवरले ऑफ ब्लू. दैट मीन्स कि इंडिया के सपोर्टर्स ज़्यादा हैं ग्राउंड में, बट पाकिस्तान को भी आदत है अवे कंडीशंस में खेलनी काफ़ी देर तक. अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेलती, विच इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, टॉपिक फॉर अनदर डे. सो मुझे नहीं लगता इतना फर्क पड़ेगा नेशनल एंथम. Also very impressed by the haircuts of the team. सारी टीम अभी दुबई आके सारे फ्रेश हुए हैं. I believe Hassan Ali के अलावा everyone is looking very sharp. So whoever the barber is, good job buddy. Team is looking very the team is looking very groomed for the matches. Giving them good cuts. And Shaheen Shafridi and Wasim Jr. are also in the crowd. And let's see, hopefully Pakistan is off to an excellent start. So 37 win probability दी हुई है उन लोगों ने इंडियन टीम को, पाकिस्तानी टीम को, और 63% इंडिया को दी हुई है, which I believe is slightly unfair, but I'm not sure किस ये पास्ट उस पे वो कर रहे होते हैं, मैचेस पे इन्होंने probability बनाई होती है या फिर मुझे नहीं पता कौन सा algorithm यूज़ करते हैं, but honestly आज के मैच में I feel 50-50. Slight edge to the Indian team definitely, with the Pakistani fast ballers missing, but it's negligible. A lot of Indian players, जिस तरह विराट कोहली टीम में वापस आए, they have to prove their mettle again, and it's amazing कि आपको विराट कोहली जैसे प्लेयर के बारे में ये कहना पड़ा है, but it is what it is.
Also, this video is sponsored by Hirali Beauty. The Indian team is in a hurry. Pakistan, India, they call it the mother of all battles. किसी marketing बंदे ने किया होगा. It is a big match. It's a big game. Especially अगर पाकिस्तान इंडिया किसी international event जिस तरह वर्ल्ड कप हो गया या चैंपियंस ट्रॉफी होगा, इवन एशिया कप टू सम एक्सटेंट हो जाए. सरप्राइजिंगली पाकिस्तान हैज वन ओनली 2 एशिया कप टाइटल्स. एक शाहिद अफरीदी वाला, शायद आपको याद है, बांग्लादेश को हराया था हमने. इंडिया को भी अश्विन को आई थिंक आखिरी ओवर में 2-3 छक्के मार के हराया था. दैट वाज अ बिग एशिया कप जो मुझे याद है. इंडिया श्रीलंका ज़्यादा जीते हैं. In the last 5 T20 internationals, India has won 4 and Pakistan has won just one, seldom one. ये it would be interesting to see कि कब T20 पड़ा है पाकिस्तान इंडिया का. और क्या उसमें जो एक याद विक्ट्री वाला है वो याद है, बट आई होप वो पुराने ना काउंट कर रहे हों. जब 2007 था 17 था, मुझे तब याद भी नहीं, जब मिसबा वाला वर्ल्ड कप था, जब मिसबा ने स्कूप करने की कोशिश की थी और कैच आउट हो गए थे. दैट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. और वो मैच ने इंडियन क्रिकेट का मोमेंटम जो बदला था, बिकॉज उससे पहले आई थिंक ना IPL होता था, ना कुछ होता था, ना इंडियन टीम उस तरह कॉन्फिडेंस या डोमिनेशन थी. महेंद्र सिंह धोनी, आप जो मर्जी आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह जो भी गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ आवर जनरेशन ऑफ दिस टाइम वाज महेंद्र सिंह धोनी. एंड क्रिकेट हम बहुत ज़्यादा देखते थे. एक पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हुई, इसके लिए धोनी आया था. और एज ए क्रिकेट फैन मुझे था कि इसको अगर कल को इन लोगों ने कैप्टन लगा दिया तो इंडियन टीम डोमिनेट करेगी. बिकॉज एक कुछ लोगों में कोई चीज़ होती है जो कहना बहुत मुश्किल है कि उसको आप एक्स फैक्टर कह लो, या कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि दीज गाइज, आई डोंट नो. एनीवे, Rizwan has an average of 50 with a strike rate of 130 in this format, which is very good. और दोनों बैट्समैन का ये है कि स्ट्राइक रेट as the inning goes on they do definitely 130 strike rate से भी with an average of 45, but with 75 matches and a best of 122, both opening batsmen are excellent. So साथ man. Bhuveshwar Kumar is opening the bowling from India's end. An average of just shy of 7, so he is very economical. But I feel अगर बॉल ज़्यादा स्विंग नहीं हो रही तो डेफिनेटली एडवांटेज लेना चाहिए पाकिस्तान को, बिकॉज आई डोंट बिलीव इंडिया की जो ओपनिंग बॉलिंग है वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग है. So let's see, Rizwan is on strike. And blocked. I think slight swing away from the batsman. Seam position आप देखेंगे हमेशा की तरह सही है. ऑफ स्टंप प्रोटेक्ट कर रहे थे, कोई आज सच स्विंग नहीं नज़र आ रही है. सो आई थिंक स्कोर अच्छा स्कोर होने के चांसेस हैं. लेट्स सी इनको व्हेन पाकिस्तान स्टार्ट अटैकिंग. बट भुवनेश्वर कुमार काफ़ी बड़ी स्विंग कराते हैं. अगर उनकी बॉल स्विंग नहीं करी मतलब पिच में स्विंग नहीं है. एंड दिस इज अ बिग अपील एंड गिवन आउट. Rizwan is saying height. This could be a very early blow for Pakistan. I think he's definitely going to review it, but until it's going above the stump, which I don't think it is because it's not very fast, I think this might actually be out. Ball swing नहीं कर रही थी, short भी बनती थी, but I guess he hadn't had his eye in. I think that will be going on to hit the wickets because leg काफ़ी ज़्यादा bend हुई है.
अगर उसने रिव्यू कराया है तो सिर्फ हाइट की वजह से कराया है, बट हाइट इतनी लग नहीं रही. रिजवान इज ऑल्सो नॉट वेरी टॉल. लेट्स सी बॉल. रिजवान अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि फासला बहुत ज़्यादा है तो बॉल हाइट से जाएगी. लेट्स सी हॉकाय होएगा तो पता चल जाएगा. हाइट तो है बॉल की, बट अब मुझे नहीं पता कि दुबई की पिच पे और लेट्स सी. बट अंपायर ने पहली दूसरी बॉल पे डिसीजन आउट दे. Missing the wickets, guys. It is high and it is high by some margin, and the umpire needs to calm down. Calm down, dude. Calm down. Absolute ridiculous. Great review by Rizwan. हाइट ज़्यादा थी, लेफ्ट टांग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जाके लगी, बट सही होएगा अगर आप कहें कि एक अर्ली स्केयर पाकिस्तान ने अवॉइड किया. होपफुली now they will be able to string some runs together. But whoever that umpire was, dude, that like live देखते हुए भी I wouldn't have given that out. But again with these decisions, अगर बॉल क्लिप भी कर रही होती है टॉप विकेट को तो umpires decision रहता सा. So extremely early scare for Pakistan. Let's see what happens next. और बाबर ने आते ही ऑफ की तरफ ड्राइव खेली है and that won't be stopped. What a beautiful shot, Babar, you legend. Babar, you legend. I think I slightly missed that. But Babar, you legend. And again through the offside, Babar, this time just a single probably. But Pakistan can definitely take advantage of the Indian bowling, which is very substandard if you ask me. It is not anywhere near being a top class bowling attack. I'm very happy with the fact that Babar has scored a boundary, but Rizwan ka scare, like that umpire dude took so much time. मुझे नहीं पता प्रेशर में आया है कि क्या है कि उसने रिजवान की हाइट देखकर फैसला किया. That was scary bad call. Is he going to review again? Oh, review kiya hai outside the off stump. Half of the team was convinced that there was an outside edge. Let's see. Rizwan का जिस तरह मैंने कहा फॉर्म थोड़ा ऑफ हुआ है. You can't really be sure. पहले ही ओवर में 2 रिव्यूज, 6 रन पाकिस्तान के द फर्स्ट ओवर. This time it's been given not out. कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं था. Can't see if there's a clear gap between bat and pad from जो वो है अल्ट्रा एज से पता चलेगा. कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रही, बट आई थिंक मिस कर दिया है. Yeah, there's clear gap between bat and pad. Yeah. So not out. I think the Indians are a bit excited. Even Rohit Sharma, like 2 decision review हैं, दोनों पाकिस्तान के फेवर में गए हैं, and just a bit surprised कि ये इन्होंने रिव्यू किया, even though जो बॉलर था वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं था. So Rizwan needs to just calm down and play an innings. And last time अगर आपको याद हो तो बाबर और रिजवान ही थे जो बड़ा ही लंबा अरसा इन्होंने गेम की थी, और अनबीटन द ओपनिंग पेयर वेंट ऑन टू विन द गेम फॉर पाकिस्तान. So 6 runs without a wicket. Babar Azam hitting a boundary on the first ball, and then changing strike. Rizwan was able to get 1 run off the leg stump.
Good over, I guess, for Pakistan. So here you can see the breakdown. Rizwan needs to calm. जिस तरह की पिच लग रही है 200 वाली पिच है. This is the new left arm seam bowler जो इंडिया का अब आया है. इनका नाम अर्शदीप सिंह है. Again 6.3 economy in 7 matches, which is fine. I believe इतना कोई tough competition शायद ना मिला हो उसमें, because until unless you are a legendary bowler you can't have those kind of numbers in T20 cricket. I've seen him bowl. Average, कोई खास pace नहीं है. स्विंग भी इतना ज़्यादा वो चीज़ बॉलिंग में नहीं है. ज़हीर खान वॉज अ ग्रेट लेफ्ट आर्म ऑफ फास्ट बॉलर इंडिया का. इरफान पठान के एक टाइम पे बहुत अच्छी बॉलिंग थी, पता नहीं फिर उसको क्या हुआ था. लेकिन आई डोंट, इट वुड बी अनफेयर टू कंपेयर दोज क्रिकेटर्स विद अर्शदीप सिंह, जिसकी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग देखा जाए वाइट बॉल, होपफुली यस वाइट गिवन, जिसकी अंडर 140 पेस, अगर बॉल स्विंग वगैरह नहीं करी तो आई फील काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज लेंगे पाकिस्तानी बैट्समैन हाफ मेजर्ड बॉलिंग का. लेट्स सी. So मसूदुर रहमान एंड जो क्या नाम था अंपायर का जिसने पलियागुरी के आई एम गेसिंग श्रीलंका, but that would have been a harsh decision, very hard. That's also a wide ball. I believe Arshdeep might be a bit too excited for this big game, and overall, just in terms of body language, the Indian team does look a bit nervous. The team also looks very young. So let's see where this goes. Karthik, Virat Kohli, Rohit Sharma are obviously experienced. I don't think अश्विन तो नहीं खेल रहे, उन्होंने शाहाल को खिलाया है अश्विन की जगह. तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस्ड इनकी टीम में प्लेयर हैं, केएल राहुल एक्सपीरियंस्ड है, शर्मा एक्सपीरियंस्ड है. स्विंग एंड मिस बाय बाबर आजम. ही अच्छा पिच है ऐसी जिसपे रन बनेंगे और बड़े रन बनेंगे. दे जस्ट नीड टू find the middle of the bat, and to start finding the middle of the bat, maybe you will find runs. Decent action, the bowler seems pretty bang average, right? He's like Pakistani team में ये bowler कभी भी जगह ना बना पाता. That's all I'm going to say. भुवेश्वर कुमार again Indian bowling में इनका जो bowler बाहर हुआ है, बिल्कुल शर्मा, हाँ, उसके अलावा कोई भी इंडियन बॉलर आई डोंट थिंक पाकिस्तानी टीम में जगह बना पाता, which is amazing. India is a huge country and Pakistan is very small in comparison to India. और जितना टैलेंट आई थिंक इंडिया बना सकता है बॉलिंग का, तो आई एम रियली सरप्राइज्ड इंडिया से और बेहतर बॉलर्स नहीं आते. इवन कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर भी आपको इंडिया का याद नहीं आता, जिस तरह शोएब अख्तर या फिर वकार यूनुस, उससे पहले वसीम अकरम ऑल्सो supposedly like पुरानी like the older batsmen would be able to tell कि वसीम अकरम अपने पीक पे कितना तेज होते थे.
Good run taken. Good run taken. So again, 1 2 3 4 5 बॉल हैं, आखिरी बॉल रह गई, 10 रन है. कोई पिच में कोई इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आती जिससे आप कहें कि बहुत ही ख़तरनाक पिच है, या फिर बॉलिंग अटैक में कोई इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आती कि जिससे आप कहें कि बहुत ज़्यादा कोई थ्रेटनिंग या कोई इस तरह करके सिचुएशन हो जाएगी. काफ़ी, सर हम नहीं कहते इजी सीन लग रहा है अभी तो, लेकिन चेक करते हैं. दोनों की स्टार्ट स्लो होता है, अगर दोनों ये एंड तक रहें तो काफ़ी ज़्यादा. व्हाट है बाबर को नेदरलैंड्स वाले, अगर आपने उसमें देखा होगा, व्हाट वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्राइव्स यू विल एवर सी इन अ क्रिकेट गेम. जस्ट लुक एट दैट शॉट. अगर क्रिकेट डिफाइन हो सकती है एक शॉट से तो आई थिंक ये शॉट होती. अगर नेदरलैंड्स वाले मैचेस आपने फॉलो किए हैं, बाबर जब ऑफ फॉर्म होते हैं, जब फॉर्म में नहीं होते तब भी बड़े रन करते हैं. और जब फॉर्म नेदरलैंड्स में मुझे लग रहा था कि फिर से बॉल इनके मिडिल में बहुत ज़्यादा आने लग गई है. और आज की भी जो 2 ड्राइव्स इन्होंने मारी से फिर से पता चल रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग फिर से बाबर के पास आ रही है. And which is very good to see and very dangerous for teams that will come up against Pakistan in the future as well. But what a beautiful drive. अगर again, if you're a cricket fan, cricket lover, तो I think इस drive ने आपके पैसे पूरे कर दिए होंगे. 2 overs gone. 14 runs. Play and a miss. Rizwan was trying to guide that one down to third man or the third man region for a run, getting beaten outside the off stump. वो भी ठीक हो जाएगा. But guys, अगर आपने ड्राइव नहीं देखी जाकर ड्राइव देखें. Perfectly middle, straight drive. Did not move from his place. I think he would have been inside. Played the ball with, I think, soft enough hands to mid-off. Was inside the circle. Rizwan had to pull in a Superman dive at the end, but I think he would have made it and would have made it easier. Replay में पता चल जाएगा. Yeah, he was inside easily. So I don't know ये लोग क्यों कर रहे हैं. Good judge, a good run taken. I think rotation of strike is also going to be very important. But जिस तरह की पिच लग रही है, मुझे नहीं पता कि सेकेंड हाफ में अब वही उसने जो बात की थी कि थोड़ा सा ग्रीन है पिच में शुरू में, क्योंकि फ्रेश पिचेस हैं. So Rohit Sharma wanted to bowl first. Played on the onside, straight to mid-on, no run taken. 2.3 overs, 15 run. 2.5 ओवरों के बाद 15 रन पाकिस्तान के. So पता नहीं बॉलिंग करते हुए कोई डिसएडवांटेज हुआ भी तो बड़ा ही मिनिमल होएगा. Top edge and Babar is gone. Bouncer 133, which was honestly not a very destructive delivery. Went for the pull shot. On another day it would have been 4 runs. Not anything else. Hard luck Babar. I think got
big on him just a bit with fine leg inside the circle. Deep square खिला रहे हैं. So Babar makes his way back to the pavilion. It is 15 for 1. Badi game padi boys. Babar, legend. We wanted you to stay till the end, but it's alright. I still feel Pakistan will come away with the victory. So I have a slight concern. फिर हम थोड़ी देर के लिए there you go. So Pakistan have lost their first wicket. It is 15 for 1. 15 रन हो गए हमारे और एक विकेट पाकिस्तान की जा चुकी है. बाबर is walking back to the pavilion again. Harmless delivery, short ball, but at it इतना क्रेडिट देना चाहिए कि इतनी शॉट कराई है कि इतनी शॉर्ट बॉल थी कि शोल्डर हाइट नहीं थी, हेड हाई थी. सो दैट्स ग्रेट के बाउंस उन्होंने लिया पिच में से. बट ऑन अनदर डे दैट वुड हैव बीन easy runs for Babar. Like that wouldn't have been difficult. But Fakhar has come in. Fakhar ने आजकल थोड़ा सा slow start करना शुरू किया हो. Can manage first few balls. और Fakhar ने आते ही plenty close. 4 runs, top edge, 4 runs. Fakhar की एक आदत है. Fakhar ने जब भी top edge लगता है usually चौका या छक्का ही होता है. So I hope the reputation and the luck for, I don't call it luck, there's some method to the madness in which even when he debuted in the series, in the Champions Trophy, I'm not sure if this was his debut or I believe it was his debut, जब उन्होंने सेंचुरी भी मारी इंडिया के खिलाफ, तब भी इन्होंने बहुत तेज इनिंग्स खेली अप द ऑर्डर, जिसमें पाकिस्तान को बहुत अच्छे स्टार्ट मिले और उसमें भी इनके जो टॉप एजेस वगैरह थे वो चौकों या छक्कों के लिए ही जा रहे होते थे. And again an inquiry, but I think bump ball हुई है, out नहीं था. Yes, Fakhar is again a big player, massive player, scores runs and scores them fast. Rizwan is also very reliable, top of the order, so I don't think there's anything to worry about. All Pakistan needs to do is not lose the match in the first innings. That is, make a total that is defendable, and I feel on this pitch, from what I've seen, it has to be a 190, 200. I'm not going to say a 200 plus total. Seems like a 200 plus total on this pitch is something that बट जिस तरह हम कह रहे थे पहले, बॉडी लैंग्वेज इंडियन टीम की जरा ऑफ लग रही थी. बॉडी लैंग्वेज अब इनकी काफ़ी रिलैक्स्ड और वो हो गई. रिजवान सीम्स अ बिट नर्वस फॉर सम रीजन. ही इज ऑन स्ट्राइक नाउ. अर्शदीप करा रहे हैं, अगेन बीटन. सो लाइव
proper finisher. Okay guys, so थोड़ी सी सिचुएशन टफ हो गई है. रिजवान आउट हो गया, 96 for 4 है पाकिस्तान. शादाब आए हैं. वसीम अकरम साहब को हो रहा है कि शादाब को नहीं आना चाहिए था आसिफ के ऊपर, बट आई थिंक पाकिस्तान 6 ओवर्स के लिए वो नहीं करना चाहती है. इंडिया इज़ अ बिट चार्ज्ड अप. It again, I feel the batting unit did not do as well as they could have. पूरी टीम की aggression, run scoring difficult थी, but मुझे ये समझ नहीं आया कि पिच की वजह से इतनी difficult थी या फिर none of the batsmen could go in and find rhythm. थोड़ा सा बाउंस वेरिएशन है पिच में, कुछ बॉलें बाउंस करके हाइट पकड़ रही हैं, कुछ लो रह रही हैं, बट इतना वो नहीं लगा. आई थिंक स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ हिटिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी. और आई फील समवन लाइक अ बाबर, अगर वो लंबा टाइम स्टे कर लेते तो फायदा होता. स्लैश्ड इट एंड इज टेकन अगेन. दैट वाज नथिंग शॉट फ्रॉम खुशदिल, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट करता हूँ बिकॉज ही इज़ प्लेड रियली वेल. बट अगेन जो हम शुरू में बात कर रहे थे मोमेंटम की, जो हम शुरू में बात करते हैं एनर्जी की, अभी एनर्जी इंडिया के साथ है एंड दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. द अगेंस्ट रन ऑफ प्ले जिसको कहते हैं वो इंडिया के साथ है. अगेन ही वाज क्रैम्प्ड फॉर रूम. देयर इज अ पर्सन ओवर देयर जस्ट फॉर दैट शॉट दैट, बट अ लॉट ऑफ bouncer पे majority wickets, I believe all wickets have been on bouncers or short pitch deliveries. So that is something the Pakistani bowlers को भी in mind रखना होगा. अब I believe Asif Ali would be brought on, but Asif का again he plays the ball really well when it's pitched up. He can hit the short ball as well, but bounce जितना हो रहा है और जितनी बॉल हाइट ले रही है can be a bit difficult. So let's see regardless कि क्या होता है. As you can see, Pakistan has now gone down to 18% probability of winning the game, 97 for 5. It's not a pleasant score to look at by any criteria or any means of imagination even. Down the leg side, that would be an extra run. Asif has come in, Shadab is facing the ball, but Asif plays one where I think he either blocks the ball or he goes hard at it. इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं. It's a group stage match. It's also practice for the World Cup. That's why the T20 हो रहा है. Asia Cup इस दफ़ा. Indian fans have come in large numbers to the ground. But I think इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं. टीम पाकिस्तान की अभी भी I believe बहुत अच्छी है. It's not a bad team. But आज I feel in terms of strategy और individual strategy players की थोड़ी सी lacking रही है. और I think that's going to be another wide. Yes. Which I do not mind at all. That's extra runs coming in. He's also complaining about, I thought that bounced. I don't know why he's waste पे अपने क्यों वो कर रहा है. But as a Pakistan fan, guys, relax, don't worry. अभी क्रिकेट के इम्तिहान और भी हैं, उन्होंने भी बैटिंग करनी है. और अगर आज इंडिया जीत भी जाता है, क्योंकि चेस करना, यू कैन कम इन विद ए सेट प्लान परहैप्स व्हेन यू आर चेजिंग, तो वो कोई परेशानी की ज़्यादा बात नहीं है. आई थिंक एज प्रैक्टिस लिया जाए इस मैच को. याद रखें चैम्पियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में मैच हार के फाइनल में जीती थी. सो कम विद द मोमेंट, कम विद द मैन. और इंडिया पाकिस्तान के आई थिंक मैचेस में हम वेट भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, बट इंडियंस हैव कम आउट, दे बोल्ड विद द प्लान. आई थिंक शॉर्ट बॉल्स का आई एम नॉट श्योर थ्रू एक्सपीरियंस, बिकॉज आई थिंक इन्होंने खेला था अपना IPL यहाँ पर
before the T20 World Cup that was held in Dubai. It's a good shot. They'll come back for 2 runs. I hope he makes it. Yes. So Pakistan has scored 100. It's almost 15 overs now. My battery died. That's why you couldn't see the picture in picture. लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंस PSL की वजह से दे न्यू की शॉर्ट बॉल करानी है विच मे बी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिच जिन्होंने भी इनको ये प्लान बनाया कुछ बनाया दैट हैज़ वर्कड आउट फॉर देम आई थिंक ऑल विकेट्स दैट पाकिस्तान टीम हैज़ लॉस्ट हैज़ बिन ऑन शॉर्टर डिलीवरीज दैट्स wasn't a bad shot but not enough power behind it just a single run from Asif Ali. Asif can hit big runs. He can maybe take us to a respectable total. I think even a 150 at this stage, Pakistan would be all right with that. Memes, tweets, a lot of comedy on Twitter right now. I don't think it's the end of the world, guys. I think the pool of players that Pakistan has right now are decent. It's you win some, you lose some. Pakistan is playing a T20 match after some time. Last match हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था पाकिस्तान में जो हम हारे थे but you can't count Pakistan out. Lifted up the offside. I think we'll come back for a second, maybe a third. Now with the fumble, yes, they run three. 5 runs from the first 3 balls of this over. That's a good strong shot down the ground, but I think it's only going to be 2 runs. I wish he had run a bit faster, which they didn't, so I think they ended up with just 1 run. I feel that could have been 2 runs. Maybe boundary choti hai to risk nahi liya, but yeah, that could have been 2 runs. Let's see how Asif Ali fares. Let's see how he is. I don't think spin par itna acha hit karta hai Asif, so maybe he should wait for the faster bowlers. Or maybe he won't swing the bat, not really able to find the gap. Will they come back for a second? They do, make it for 2 runs. 7 runs from the over so far. Played right back to the bowler by Asif Ali. 7 runs from that over. 4 overs to go. Pakistan Nelson Bay 111 for 5. That is the latest score. एक पूरा हाफ मैच का रहता है, तो let's not lose all hope as yet.
It's good to see Pakistan India play, and a lot of youngsters in both teams. That's also good. I feel Indian bowling, honestly speaking, they've done really well considering they do not have a very strong bowling lineup. I still feel India is very weak when it comes to none of their bowlers in this team, except for Bumrah, एक उनका bowler है, which I feel is a striker. None of these bowlers anyone would fear. They're not. I'm not sure उनकी rankings वगैरह के, but rankings में भी कोई दुनिया में ये कोई खास ऊपर नहीं आते हैं. But I think bouncer वाली strategy has worked for them. Ball is taking a bit of bounce, and Pakistani batsmen की individual strategy और game strategy थोड़ा सा vary करते रहे. If you can go up to let's say 160, I feel it's going to be a total that Pakistan would take right now. 160 Pakistan को अभी दे दिया जाए, I think Pakistanis will take that. Let's see, that was slightly wide, but he moved, not given as a wide. I think Bhuveshwar Bhuvi, let's just call him Bhuvi buddies. Bhuvi, yeah, someone like an Asif Ali would need to play most balls again. Someone like Bhuveshwar Kumar, ideal, not too fast. I think Asif Ali would enjoy batting against someone like. Gets bat on ball, no, straight to the fielder is only going to be 1 run. Bhuveshwar. Yeah, Bhuveshwar Kumar was the one who got our captain Babar Azam out. This could be a wicket. This is going to be a wicket. Asif Ali again would have fancied someone like again easy 120 kilometers per hour ball. You expect Asif to hit that out of the ground, but I guess it's not Pakistan's day. It's not Asif's day. Nawaz can bat, so और उसके बाद आपकी tail शुरू हो जाएगी. तो slower ball, bottom end लगा है bat का. Again, one cannot help but be disappointed. Again, Pakistan is likely to qualify for the second stage of the series because Hong Kong is the other team that is in this group. You expect Pakistan to beat Hong Kong and India to also beat Hong Kong, so Pakistan should qualify and there could be another Pakistan-India game, so let's not be overly disappointed. And we are going to be live with you, so do not worry. All those who are watching, hope this has been entertaining and also fun for you guys to watch. It's disappointing losing a international game, it always is, but let's see if the Pakistani team has any fight. Again, 132 seam up delivery. It's difficult for any new batsman to come in to start hitting
Uh, Immediately, the Indian team seems very relaxed, which is a good sign for them, I guess. Playing away from his body, it's T20 cricket. You can't really blame him for not having the perfect technique. But 113 runs. We'll also see कि अब Indian जो fielders हैं, they are also trying to close in, not give away any extra singles. Decided not to run. I think उनके bat को touch हुई होगी ball. So doing the right thing by not running. There is actually no law that stops the batsman from running. If it goes for four, it will be counted as a boundary. But in the spirit of the game, you do not run. I don't understand these kind of rules. I wonder if there's 2 runs required of the last ball of a game and it touches your bat, you would run for the second single, to make it 2 runs. Like, I think the spirit of the game only applies as long as again, I feel India has a very pedestrian bowling lineup. It's not very strong. None of the bowlers I feel especially threatening. I have no idea who this dude on screen is. If you guys are also watching live, looks nice. I like the shalwar kameez and the waistcoat. Looks decent. I'm just gonna wear my glasses for a bit. I feel like being cool. Another wicket. Shouldn't have put these on. Nawaz. Slide edge outside the off stump, straight to the wicket keeper. And now we have officially hit our tail, the tail enders. Yep, flirting outside the off stump. I don't know if it's lack of practice or not being familiar with the conditions. Unfortunately, it's a low scoring game now. Not a lot of people would be watching. We'd lose interest. I think पाकिस्तानियों के दिल ही बड़े छोटे हैं, हारने लगते हैं तो सारे मैच देखने बंद कर जाते हैं. So yes, is what is, I guess. So Haris Rauf can hit the ball. It would be interesting to see when our bowlers take the pitch and our fielders take the pitch. How does the pitch play then? Because we definitely have better bowlers than them, and he has beat the fielder and has gone for a couple of runs. I think that is the attitude to have. I don't think there's any point in not playing your shots. Again, very pedestrian bowling. I wouldn't really be overly worried
about the Indian bowling line. I think without Bumrah, I think Pakistan needed a better strategy. I just feel they lost too many wickets on the shorter balls, and again, I'm not sure if he got anything on that. That's going to be wide 4 runs. I think so. It's given us 4 runs. We definitely got something on that. Another short one. The keeper wasn't able to get his hands on it. मेरे अंदर का वैसे पता नहीं अंग्रेज़ क्यों जागता है और कमेंट्री आई थिंक अंग्रेज़ी में सुनने की आदत है यस got a big chunk of the bat on that. Haris Rauf I believe was facing that, and that goes for 4 runs. Haris Rauf, one thing I like about him, he's a fighter. Usually, actually I wasn't the biggest fan when he started off. Can leak a lot of runs, but the guy is fast. You can unleash him on any attack, any pitch, and he will cause trouble. That was a good in-swinging Yorker length delivery. Again, it's not very fast. Atik had a very good day today. Oh, inside edge onto his foot and narrowly misses the stumps. I think I'd still be surprised. I'm not sure if this is going to be. I hope they can make a game out of it. Still, it would be good to see some. It's good to see a competitive game. Again, a big swing and a miss. I think that's going to be the course of action moving forward. Hit or miss. Seems pretty happy. But that's a good, again hit this time. It did connect with the bat and gone for 4 runs. I think Rauf doing what we expected of Asif or Iftikhar to do, got some runs, disappointed in Khushtil. I believe so. Babar Azam, Rizwan, Fakhar Zaman, they have proven themselves at the highest levels at multiple times. Now it's up to, let's say, your Khushtil Shahs, your Iftikhars, your Asif Alis, even your Shadabs, to prove themselves that they deserve to be playing for Pakistan. Pakistan will now have to build a middle order. With the World Cup around the corner, some of these guys would need to step up. So it would be very interesting to see if these players continue for the World Cup in Australia, or you might see some new faces in the middle order. Again, that was on the pads, picked up, should be 4 runs. Yes, that was a freebie. Thank you, Bhuveshwar, Bhuvi boy, for a freebie. Again, remember, like, I would have been much happier if he had someone like a Mohammad Amir in, like, वो एशिया कप के highlights भी दिखा रहे थे कोहली की innings की जो given out fairly straight. I think you should take the review. Might be outside the off stump, didn't look like it. Could be high, also didn't look like it. But I think he will take the review. He is standing there.
Yep, that's going on to hit middle and off, so that would be definitely out. Yeah, wasn't able to connect any sort of bat. And again, a bit disappointed because he wasn't really going for a shot, and that's gonna crash into middle and off. So I don't think there's going to be any respite. He's standing back, which is well, and yes, hitting middle and off. So that was pretty straightforward. Seem a little bit frustrated, the bowlers, the batsmen, sorry, the Pakistani batsmen. It's alright, guys, it's alright, lads. It's just a game. That's again out. That's again out. Again, that was pretty straightforward. I think identical deliveries, and yeah, you can review that one as well. I don't think that's gonna make a ton of difference. Seemed pretty straightforward to me. Is this? I would be surprised if there's anything. Yeah, still would go on to hit leg stump perhaps. He's on his height, might be an issue, I doubt it. He's on his toes and hit the top of the knee pad area. So still I believe would go on to umpire's call. So could have gone both ways again with these decisions. Umpire can stick with his decision. Yep. So Bhuvi is on a hat trick. Such fun, interesting times. Aren't we all very excited? Shahnawaz Dhani is going to come in and have a bat. I don't think Shahnawaz Dhani is known for his batting, so a great chance for Bhuveshwar Kumar to get a hat trick in T20s or in international cricket. I'm not sure if he has done that before. And on a hat trick, I think it would be interesting if Pakistan could bat this out, if they complete the 20 overs. I have my doubts. Shahnawaz Dhani doesn't seem very. Let's analyze Shahnawaz Dhani ka stance. We can analyze it. Stands up tall, does well. Oh, would look at that forward defense, Dhani. Dhani, you should be a batsman. Dhani is going to have fun. Dhani looks like someone who has come to have fun. And that decision could have gone either way, guys. So this one was pretty plumb. Second one perhaps also looked very straightforward. I don't blame the umpire for giving that out. I would have given that out. This would have been more fun if we had like oh, that's it for a 6. Come on, Dhani. 134, guys.
That's still a total. That is still a total. And Pakistani dressing room doesn't really seem to worried about this, which is a good sign. I'm very happy about that. You good one, Dhani. Come on, lads. Let's take two. Let's run two. Are we gonna run one? We've run two. Come on, guys. All good, boys. All good. All good, lads. Hopefully, this channel can pick up and we can get more viewers. I think at one point in time we had. I think at one time we had 4 or 5 people watching us, and next time we'll try and be higher on the somehow get higher on search somehow. Let's see how, if that would be possible. Big swing and a miss. Nobody wasn't. I like this team, it has a fighting spirit to it. Single-handed, is it going to be taken? It's dropped. Come on, run four. No one is getting the ball. 4 runs, come on, boys. Run 3. That's it, come on. $139, come on, guys. Yes, oh, that was hit strong. Can they come back for 2? They will definitely come back for 2. Shava was. So 140 Parks. Okay, this is still decent, guys. I haven't lost all hope. At least that gives us some runs on the board to again. I'm just surprised how these tail enders can muster up a few runs for us while our middle order completely abandoned us. I think India got to a 150. Oh, that got come on all the way 6 runs, guys. Legends. These guys are not players, these guys are legends of the game. Haris, Dhani, you beauty. Dhani should be opening the batting. That's what I was saying about this Indian bowling having no strike or no spine or no backbone. You can really have a go at them. Look at the crowd, they seem. Come on.
It's always great to see the crowd reactions and all. It's still not the greatest road, but it's still fun to see some fight, right? That's why we enjoy the game, right? I never expected Pakistan to get to anywhere near 150, but here we are, I guess. Let's see two balls. Come on, Dhani. Can you give us two more big ones? Ah, ball. Come on, Dhani. It's okay. It's okay. Come on, guys. Dhani is going to be a handful, by the way. He can bowl the short ones and he can bowl them well. So, Pakistan 147 all out. I'm going to charge my phone for a bit. So, thoughts on the innings before I do charge my phone. I think the break is going to be for about 15 minutes. It's not going to be a very long break. As you can see, the 20% problem. Let's go over the batting. Rizwan was decent. I feel he never got into his stride today. He was. So Rizwan really didn't get into stride today. He played a few good shots. The six that he was really strong, but he kept losing partners throughout the innings. But never found the momentum I believe that he was looking for. I believe if Babar and Rizwan could have spent more time on the crease, would have been better. Babar got out to a short ball. It's okay. It's all right. Babar is a legend, and you can have a bad day. Surprisingly, most of the wickets that came were from short deliveries. So I think Pakistan can take advantage of that. Fakhr, on the other hand, got out another short delivery. No one except for him knew that he had hit it, and he walked, which was, I think, gentlemanlike. And Fakhr is again will do well. You can have a bad day. He played his game. Not really. Iftikhar did all right. He scored 28 runs from 22 balls. Would have wanted him to go for played much more substantial innings though. Again, got out on a short ball from Hardik Pandya. Khushdil Shah, nothing to write about, played 7 balls. Shadab Khan also nothing special. Asif Ali, nothing special. Especially Asif. Again, with Asif, I feel he needs to be very sure of the balls that he's going to hit and the balls that he's going to defend against. That was a slower ball that he got out to. If it gotten in line, if he would have read that ball, Asif Ali against someone like with Bhuveshwar Kumar's pace, he should have been hitting those balls out of the ground. Nawaz again, nothing special, was kept on being beat, and I think was caught behind. Haris Rauf, I believe, did well with what he could. Hit 2 boundaries and ran really hard. And Shahnawaz Dhania giving us some kind of a total to work with. You can also see the fall of wickets over here. I think Pandya did well. 1, 2, 3 wickets for Pandya. Kumar also 1, 2, 3 wickets for Kumar. Avesh Khan again is a bowler that I feel a lot of, like, especially in these kind of pitches, you can really hurt him. Arshdeep's again, the bowling does not really have a lot of spine, so that's why I'm a little bit disappointed. It'll be interesting to see how our bowlers do with a bit more pace, bit more bounce, bit more pizzazz about them. So it'll be interesting to see. But Indian, I think, batting overall, especially when they know they have a total to chase, they won't go out all guns blazing. They would have a very professional approach. I think you can say a professional approach to this chase. They will not try and make things difficult for them. But let's see if the pitch has any demons and devils lurking in the cracks. I will join you guys in a bit once the second half of the match starts. So I'm gonna mute the video, and also you can still see the score and we'd still be live. Cheers.
Guys, we are back and such an exciting start to the match. India has lost their first wicket, and I have no idea how that happened because the match started even before I expected it to. But India is 1 for 1. Perfect delivery to a new batsman at this pitch. I want to see the replay of that wicket, guys. From this youngster. Good wrist position. Swinging in, Virat Kohli leaving it alone. He's got some heels, bowling at 144. Let's refresh that browser and see if we can. And you expect that as well. Young man making his debut. KL Rahul. Country, getting a wicket off the second delivery. Oh! What a tough chance, but a chance nonetheless. Tough chance, but it was a chance. That was the moment. Come on, fucker, come on, fucker. It's alright, it's alright. See, regardless of the result, this is what I like to see. Now you can see Pakistani bowling has real bite. Wasn't that far? Could have gotten both hands to it. Fucker could have taken it. Would that be? It wasn't an easy chance by any stretch of the imagination, but still two slip fielders in place. Don't stray down the leg side, my boy. Don't stray down the. So this, I hope it's not an easy chase. Kohli nahi hoega tujhse chase. Shot, he pushed at it, it flew. Was a difficult one. Had to put in that dive as well. Focus. Imagine if we also had our Shaheen in this team. Then it would have been a real match. Then it would have been a real So game. happening. Two slips still. It's all. Running into ball his last delivery of his first over. Now leg side. He's gonna bowl that. Have to. Minus one behind the stumps. Oh, इसको injured तो नहीं हो गया है Rizwan? Yep. But does well there, Rizwan, but is in a bit of a trouble there. Cramps. Yeah, Rizwan was there on the field for some time. It's really hot out there. His name, they're calling the medics as soon as possible. It's hot in Newman. I hope उसने टांग ना twist की हो. That's my. And straight away. नहीं, good cramp side. हुआ, cramp And हुआ, it's cramp nothing, हुआ. and it's never a good sign. And Rizwan seems to be in a lot of pain. India wouldn't mind that. India wouldn't mind a break. It's all about the weather, knowing him as a professional, thorough professional, Rizwan. It happens. It happens to all of us. Under pressure, hot weather. But good take by Rizwan down the leg side. Smell so far. Again with these Pakistani bowlers, they're gonna bowl 140 plus. Most of them, they're gonna be fast. It's very, very tasty. They're not gonna be so easy to put away for runs, and that's why Pakistani bowling has always been historically fun to watch. So even a score like 140, I hope Pakistan can make a game out of it. I really do. But let's hope Rizwan stays strong, and hopefully we'll see the last ball of this over, and hopefully it's a wicket. Fingers crossed, guys. Fingers crossed. Peace. I think Pakistan needs to be aggressive. Pakistan needs to be aggressive. Pakistan shouldn't let their energies down. I think run of play अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है. See again. Let's see the. I'm gonna see the replay for the. Oh. So played it on to the stumps. It's dabbling outside. I think beaten for pace. Was expecting it to bounce more. Not a bit, quite tentative on that shot. Maza aayega. So guys, this is our first live stream of cricket. We have
This is PCFC, Pakistan Cricket Fan Channel. This is the launch of a fan channel. We will ramp up the quality and everything eventually. Think of this as our debut. We just wanted to see if one, कभी हमने ज़िंदगी में पहले स्ट्रीमिंग नहीं की तो हम चेक कर रहे थे कि हमसे हो भी सकती है सही कि नहीं हो सकती. अभी तक तो मुझे ठीक लग रही है. थोड़ी चीज़ें हम लेफ्ट राइट पे बेहतर करेंगे, स्कोर बोर्ड वगैरह चीज़ें वगैरह, कि आपको भी एक पूरा एक्सपीरियंस हो अगर आप हमारे साथ मैच देख रहे हो. लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, 3 runs from it so far. Ooh, that's why was this celebrating now? Rizwan, come on, 3 seconds. What a ball, Rizwan. Oh, ऐसा लग रहा है साउथ अफ्रीका के पिचेस पे बॉलिंग हो रही है यार. That's what I was saying. Like, now Pakistan is placed very, बड़ी अच्छी एक कॉम्बिनेशन इस टीम की इस तरह से बनी हुई है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो रिलायबल हैं. जिस तरह बाबर आजम और रिजवान और इवन फ़खर को मैं इस कैटेगरी में दूंगा, जो थोड़ी देर से अब खेल रहे हैं, काफ़ी देर से खेल रहे हैं और रन स्कोर कर रहे हैं. यस, मिडिल ऑर्डर का इशू है, उसमें भी लड़के जो हैं वो टैलेंटेड हैं. दे जस्ट नीड टू अपनी गेम फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है. रिजवान का शायद आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, जब डेब्यू हुआ था, जब शुरू में खेल रहा था, अपनी गेम अभी भी फिगर आउट कर रहा था. जब उसको अपना मेथड समझ आ गया, तरीका समझ आ गया खेलने का, तब वो एक बहुत अच्छा परफॉर्मर बन गया. काफ़ी ज़्यादा ऐसे लड़के हैं हमारे मिडिल ऑर्डर में जो टैलेंटेड हैं, जो गेम समझते भी हैं, बट अपनी गेम अभी डेवलप करनी है, अपना स्टाइल ऑफ प्ले डेवलप करना है. आई होप प्लेयर्स लाइक बाबर और क्या नाम रहते हैं, रिजवान कैन हेल्प देम आउट. Dhani to take the second over from the other end, DSC and Dubai, something center, I don't know what it is. Dhani is someone I really like. Tall, lanky fellow, character, loves taking wickets, loves being part of the game. Lovely run up, simple run up, good action. Ooh. So again, you see, I like Virat is smiling. I really enjoy Virat as a player. I think he's an excellent player. I want to see the back of him. And I want to see the replay of the last delivery. Yaar, उसमें DS like see if there was an outside edge. और नसीम शाह का इतना प्यारा एक्शन है. If someone like Dale Steyn can work with him, I'm not sure if there's anyone listening. Dale Steyn जैसा अगर कोच उसको मिले, because Dale Steyn और इसके एक्शन में again outside the off stump, swinging away, playing away from his body, could not find the outside edge. Again, these are the little things that can go in your favor. You see, पाकिस्तान का भी ये हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे चांसेस थे जो एज हो गए या फिर आउट हो गया, जिन पे जो शायद किसी और दिन पे नहीं होता. सो मे बी कोई भी दिन किसी का भी हो सकता है. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. 2 runs from that ball, मेरा जो स्ट्रीम, so plays it over, did not connect as well. बाबर फील्ड करके पीछे, या it's 2 runs from that delivery. I think middle orders like new ball के साथ भी Pakistan does have a chance, but even with the older ball, I think मुझे नहीं पता इस बॉल पे कराएगा कि नहीं कराएगा, बट एक बाउंसर डालनी चाहिए, ज़रूर डालनी चाहिए. टेस्ट करना चाहिए कोहली को भी स्टार्ट में विद अ शॉर्ट वन, और फील्ड थोड़ी सी बाबर को. Changing the field around. एक स्लिप रिमूव कर दी. Probably will go for the
shorter ball. I'm not sure if there is any. Yeah, और वो एक मसला अगेन शॉर्ट बॉल करानी चाहिए भी थी, बट अगेन विराट कोहली लाइक जिस तरह 4 runs, गुड शॉट विराट, congratulations on getting a boundary, that was, but वही चीज़ अगर मेरे जैसा नॉविस, मेरे जैसा बंदा जो क्रिकेट का फैन है, वो पहले से कॉल कर सकते हैं शॉर्ट बॉल आने वाली है, तो आई थिंक कोई इनका तरीका होना चाहिए कम्युनिकेट करने का बेहतर कि जी किस टाइम पे कौन सी बॉल. So I just wonder like, okay, not a bad first over Dhani, hard luck, except for the short ball. I feel we really had a chance there. I would put Haris Rauf in also to come in, maybe give this one to Naseem Shah and have Haris Rauf also have a go with the new ball, because Haris Rauf भी good length से ball को bounce करा सकता है. So that's going to be interesting to say the least. I hope there's a fight. I hope it's a tense competition. Anyway, if anyone is listening or if anyone is here, यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि So Naseem Shah has a beautiful action bowling 140 plus, which is excellent. I feel he can still ramp up his pace. Looking at his action, it's such a beautiful action, simple action. It reminds me of a young James Anderson. Beautiful action. वसीम भाई भी सेम बात करें कि स्पीड और भी तेज़ होगी लड़की की, बट एक्शन बहुत खूबसूरत है. नो विराट किधर जा रहे हो भाई? इसका लोगों ने वो नहीं दिखाया यार, अल्ट्रा एज या कोई इस तरह की चीज़ जो उसकी बाहर से बॉल गई थी. बट विद द न्यू बॉल आई फील अब इतनी ज़्यादा मूवमेंट वगैरह थोड़ी कम हो गई है. बट on the leg side, easy one at least. I'm not sure if they're gonna run 2, but shouldn't. The last 3-2 versus Pakistan. 2021 में हुआ था, but लास्ट 5 ODIs का गिन रहे हैं. 2016 में उससे पहले और 2 हुए थे T20s पाकिस्तान और इंडिया के बीच में. You can't really count those starts. That's what 5 years ago. शुरू में एक start दिखा रहे थे. Again inside edge and sneaks in a single. It's very simple. अगर इंडिया के बैट्समैन if they do not lose wickets and these two are there till the end, the likelihood, the probability of Pakistan winning significantly decreases, because these guys are going to keep on scoring runs. ये इस तरह के बैट्समैन नहीं जो ब्लॉक करते रहेंगे. They can, or also both of these are boundary hitters. Not big hitters, but definitely boundary hitters. जिस तरह बाबर और रिजवान और कोई भी प्लेयर, आई थिंक T20 में कौन सा प्लेयर ब्लॉक करता है. But they can rotate the strike as well. वो दिखा रहे हैं एशिया
कप वाला 2016 का, 2016 को भी भाई 6 साल हो गए, बड़ा पुराना हो गया। आमिर था और आमिर ने इसमें शुरू में आके विकेटें ली थी। Anyone who's wondering, PCFC is Pakistan Cricket Fan Club, fan channel actually. Would be a single. Rohit Sharma is also a class act when it comes to batting. 3 overs gone. It's 15 for 1 wicket lost. I hope हारिस रऊफ को एक ओवर दे। आई थिंक रोटेट करना भी नबी नसीम, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था दूसरा ओवर है, थक गया है जिस तरह। आई थिंक आपको बॉलर्स को इतना फ्रेश रखना होगा कि 6 की 6 बॉलें पूरी जान से डाल सकें। मैं वाकई में तीनों 1 ईच में भी करवाता, बिकॉज मैं हारिस रऊफ को नई बॉल के साथ पिच में हल्का सा बाउंस है, आई थिंक ही कुड हैव गॉटन देयर बैट्समैन इन वेरी ऑकवर्ड पोजीशंस, especially with extra bounce. Could have been something there. Haris Rauf, like I predicted giving Haris Rauf an over after धानी के साथ उन्होंने किया था, which isn't a bad option. धानी is excellent bowler. धानी ने 1-2 बॉलें बड़ी अच्छी मार डाली हैं उसमें, लेकिन शॉर्ट बॉल अगेन वो प्रेडिक्टेबल थी। इसकी शॉर्ट बॉल पे शायद थोड़ा इशू हो। कोहली फेसिंग मैनेजेस इट easily again, 140 plus आराम से। I believe Dhani's bowls in the 130s if I'm not mistaken, but I think he can also bring it up to 140s. So Dhani has a high arm action, उसकी वजह से इसकी बॉल को बाउंस भी अच्छा मिलता है। Pakistan needs to be on hunt for wickets throughout. They can't let their guards down. ये पेस आई है, पेस नहीं दिखाई इन्होंने। 150 as easy as you like, and again on another day this would have been an outside edge. And straight to the keeper. और चेस करना थोड़ा सा आसान इसलिए भी आपको टोटल पता है। So India also knows that they do not have to go all guns blazing. 148 is a very achievable total. So you do get lucky in that aspect. Chasing का at least ये फायदा है, but again Pakistan have runs on the board. Pressure chase का हमेशा होता है. They can't play too many dot balls. Run rate would keep on going up. Right now it is at 8 runs per over. Start off at 7.5. Again I don't think modern day cricketers इतना ज़्यादा परेशान होते हैं इतने run rate से, but still I think scoreboard pressure होता है। अभी शुरू में तो I think सोच भी नहीं रहे होंगे। Again 144 clicks, that's not bad at all, my boy. I think Wasim Akram is also impressed by the same things I am impressed with, which is good. Wasim bhai and I think the same way. What a legend. इसके Wasim bhai की पुरानी YouTube videos देखो ना। For some reason उसकी बॉल को अक्सर कोई बल्ला लगा ही नहीं सकता था। आउटसाइड द ऑफ स्टंप इतने आराम से बीट के मुझे समझ नहीं थी पहले क्रिकेटर्स को बैटिंग नहीं आती थी या वसीम भाई की बॉलिंग ही बड़ी अच्छी थी। टॉप एज और gone for 6. So here's the thing, right? It's gone for 6 runs, which is fine.
इसी तरह ही टॉपेज हुआ था बाबर का और वो आउट हो गया था. दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन क्रिकेट. फ़खर का हुआ था, फ़खर का पीछे 4 रन के लिए चला गया था. सो I think this has gone all the way. It looked flat 6. Yep, definitely 6 runs. As you can see the ball pitching. Yeah, 6 runs. Not very intended to play the ball, but again that could have gone anywhere. 62 meters. Chase that. Ooh, slower one. 8 runs from that over. I think he beat the outside edge of Rohit Sharma in that one. So 23 runs from the first 4 overs. Shaky start. The bowlers definitely have their tails up, running in hard. The game will probably be decided in the middle overs. It would be great from Pakistan's perspective. We can get at least one more breakthrough before the end of the power play, which is 6 overs these days. Let me know if I'm wrong. Good line and length. Shanwaz Dhani 138 or effortless ball 138. Out there. So again I feel you can call it luck, you can call it whatever. Again Rohit Sharma की टिड्डी निकली हुई टिड्डी. He's not the fittest player, let's just say that. I like his persona overall. I'm sure इसका थोड़ा सा ना मुझे बाद में बताऊंगा मैं. थोड़ा सा ना controversial type लगता है मुझे रोहित शर्मा. अपने opinions शेयर नहीं करता. मुझे लगता है opinions बड़े खतरनाक होंगे इसके. इसलिए अच्छी बात है शेयर नहीं करता. इसको रिटायर करने में फिर काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होनी है इससे. बट विराट ने लास्ट ओवर में जो चौका मारा था वो अगेन वो उससे कोई शर्त भी लगा लेता. उसको पता था कि शॉर्ट बॉल आ रही है फॉर श्योर. नाउ व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू. पेप्सी का किधर हो गया भाई स्पॉन्सरशिप. लेट मी जस्ट सी. देखिए TCL का बहुत बड़ा सा स्पॉन्सर है पेप्सी. you'll see the kit again. see the पेप्सी का है उसमें भाई. अच्छी लेंथ पे कराएं. नहीं ये आप ओवर पिच आउटसाइड द ऑफ स्टंप कराओगे तो विराट कोहली वुड नॉट लेट दैट गो. Good shot by Virat Kohli, 4 runs. Again, slightly overpitched outside the off stump. पूरा चांस मिला हाथ खोलने का. Didn't go exactly where he planned it to go, but with fielders inside the circle, getting decent connection, you're most likely to score a boundary. Come on, Dhani. That's much better. That is the line.
See, he's going to play cricketing shots. Virat Kohli is not going to slog. If you bowl good lines, विकेट भी देगा. इसको बस आपने easy ball नहीं देनी. I liked how he rotated the ballers in the power play. If Pakistan were a bit lucky, we could have gotten more wickets. Good length. Gain थोड़ा सा ज़्यादा short than what I would have liked. Would be max single ही भागेंगे, double भी नहीं लेंगे. Yeah. Is India the favorite? If you look at Google's probability, you would probably agree, yes, India is the favorite. I think if I was a betting man, अगर मैं जुआरी होता तो मैं अभी पैसे इंडिया पे लगाता for sure. जब मैं ग्लासेस पहनता हूँ विकेट गिरती है. Let's see. Come on, Rauf. Good ball. अच्छा, कुछ कमेंटेटर्स को ना सुनने का मजा आता है और कुछ को बिल्कुल सुनने का मजा नहीं आता. वसीम अकरम ऐसा कमेंटेटर है जो कमेंट्री कर रहा हो तो आपको पता नहीं, सीम्स गुड, लाइक मजा आता है वसीम अकरम की कमेंट्री सुनने का. वकार यूनुस का ना इतना को मजा नहीं था. रमीज राजा भी कमेंट्री करता था ना, अच्छी बात है, उसको चेयरमैन लगा दिया, कमेंट्री में नहीं आता. वो लगता है जब भी वो आता है ना पाकिस्तान आने लग जाती है. आई थिंक सुपरस्टिशियस चीज़ें, ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर नॉट ट्रू. मैं आपको बता दूँ, व्हाट अ शॉट यार विराट, व्हाट अ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, बिल्कुल. व्हाट अ क्लास एक्ट यार, दिस गाय, व्हाट अ क्लास एक्ट. I think that went for 4, yeah. That went for 4, excellent stroke by Virat. Like, as a cricket fan, you need to appreciate how well that was played. इससे एक चीज़ होता है कि अर्ली बॉल की लाइन रीड कर रहा है, थोड़ी ज़्यादा ही छोटी मारी, लेकिन यहाँ से अगर वो बॉल बाउंस नहीं कर रही या फिर पेस उस तरह नहीं आ रही तो बड़ा मुश्किल है. Bowls a slow one, but Virat is a smart enough batsman to know how to deal with that. And if India keeps on playing the way they are, this chase should not be too difficult for them. So Kodiak seems like a new car. You can call that, no, easy, चलेगी bro, चलेगी. Another 4 runs, bowling on the pads. Again with Haris Rauf, you have this expectation on line on length being a little wavered sometimes. But जिस तरह कोहली is playing well, विराट इतना नहीं खेल रहा, slow run I think कराने की कोशिश की. But अगर आप टांगों में कराओगे तो bro ये तो होने के chances हैं. And the Indian fans seem to have enjoyed it. I think Rohit Sharma is also good with the pull shot, but I still wouldn't mind pulling a few short ones. What a ball, yaar! Like how can like that?
that was a perfect cricketing delivery. I'm surprised that's just 141. That looked much faster. Perfect line, perfect length, and if he can do this 6 balls of the over, yeah, oof. Completely beaten. Completely beaten. What a delivery. What a delivery. On another day, Pakistan would have gotten a few more wickets in the power play. They managed to beat the outside edge multiple times. Some balls जो chop की उन्होंने वो विकेटों में वापस नहीं आई. Catch भी drop हुआ फखर से. It was a difficult chance. It was a very difficult chance. But if you want to win big matches like this, so आपको करना. Shadab seems to be having fun out there. 9 runs from the over. I think that is the end of the power play. 38 without loss, going at steady 6.3. 7.5 was the required rate. Has gone slightly up, but it still shouldn't be any trouble if these both legends, I would call these both guys, Rohit Sharma and Virat Kohli, are able to stay on the crease for even 14 overs, let's say the next 6 overs, 6 to 8 overs. So they will make the chase easy for them. On the other hand, good to see Pakistani bowlers really putting in a shift. They bowled fast, they bowled good lengths most of the time, and didn't make batting easy for them. पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका हिस्टोरिकली भी बड़े अच्छे बॉलर्स इन दोनों मुल्क से निकलते हैं. ऑस्ट्रेलिया से भी निकलते हैं तेज बॉलर्स. शादाब एंड थोड़ी सी वीकनेस है विराट की अगेंस्ट लेग स्पिनर्स. आई एम नॉट श्योर इतनी इस पिच पे. लेट्स सी, देयर वाज सम टर्न एंड बाउंस एक्चुअली. You can't really run if the ball has hit you, can you? I'm not sure. हाँ, अगर throw पे लगे तो नहीं कर सकते. रोहित has dad bod का नाम सुना किसी ने? जो जरा थोड़ी ढीली ढीली सी होती है. यार again, imagine ये वो उसको कैच करा देता. Rohit Sharma is very Teddy-like in terms of his figure these days. अच्छा, वैसे seeing this over, Shadab अपनी line और length अगर वो कर सके, I hope he's been working on his leg spin, because उस्मान कादिर की तरफ से थोड़ा सा competition है. अगर line और length अपनी ये कर सके सही manage, I'd be surprised if it'd be easy to put away for any sort of runs, because the ball is turning a bit और wrong one भी कराता है, spin भी कराता है. Again beating him up. Beautiful delivery, beautiful delivery. And यही चीज़ पाकिस्तान has been just a bit unlucky. Pakistan has been just a bit unlucky. किस चीज़ का I think वो हो रहा है, like maybe stumping chance. I don't think there's a lot to it. Let me just turn up the volume for this one. Really close to the outside edge, by the way. Like it's in the. No, he's fine. He's fine. He's fine. That has been grounded. Bat was grounded, so no surprises there. And this is going to be a big roar from the Indian crowd for the not out. But a great delivery, Shadab. Ball is spinning. It's not going to be as easy, but these two batsmen again, chase का ये बड़ा फायदा है ना. 39 for 1 होता और पहले बैटिंग कर रहे होते तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है दूसरी चीज़ इन चीज़ों में.
Because if you're going at, let's say this run rate, it's under 6 and over. Pakistan throughout their innings was over 6, around 7 runs per over पे पाकिस्तान खेल रही थी throughout. So अभी इस टाइम पर उस चीज़ से, बट खैर इतनी कोई वो चीज़ नहीं, चेस भी लाइक टॉस आप कंट्रोल नहीं कर सकते. That was a good stroke, but I think it's going to be one. They're going to have someone posted in the outfield on the offside. But very good over by Shadab. Shadab का थोड़ा सा it started off as a leg spinner who used to spin the ball big. काफ़ी बड़ा टर्न मिलता था शादाब को. फिर थोड़ा सा फॉर्म वगैरह ऑफ हुआ. आई थिंक बैटिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग गया तो उसकी वजह से. बट ही इज़ स्टिल एन एक्सीलेंट फील्डर, decent leg spinner. I feel like someone like a Mushtaq Ahmed or जो भी आपके can make a real bowler out of him. He's not like he's actually not a real bowler, but some make him more of a threat as a leg spinner than what he is right now. Has a very unique leg spin action. बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है off spinner-esque action है इसका. But an excellent athlete as well. और batting में भी अभी I think there's a lot to be desired from Shadab. आप चाहोगे कि he's trying to be a power hitter, but rather than being a power hitter, I think Shadab can be someone who is a boundary getter. Differentiate करना बड़ा ज़रूरी है, क्या दोनों चीज़ों में फ़र्क है. अच्छा 60% चांस दे रहा है ये इनका कोई एल्गोरिदम एशिया कप वालों का. गूगल ने 74% चांस दिया है. तो रिगार्डलेस इंडिया इज फेवरेट्स, बट एट दिस स्टेज पाकिस्तान वुड हैव एटलीस्ट एक से शायद 2 विकेटें गिर गई, बट रन पाकिस्तान के ज़्यादा थे एट दिस स्टेज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो मैं मोस्ट लाइकली नहीं हूँ बिकॉज पाकिस्तान 7 की एवरेज से खेल रहा था. इनका भी अंडर 6 रन की एवरेज चल रही है इनकी. बस यार ढीली बॉलिंग ना कराएं. ये ट्राइज टू हिट इट अगेन. यू सी हम किस्मत की बात कर रहे हैं, ये भी शॉटें लगनी भी शुरू हो जाएंगी, वो भी कोई इशू नहीं है. अभी स्लॉग स्वीप, और वुडंट रियली कॉल इट अ स्लॉग स्वीप बट वाज अ प्रॉपर स्वीप शॉट एरियल, बट टॉप एज हुआ है और फील्डर्स के बीच में जाके गिरी है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, हो जाता है. बट वही बात है, आई थिंक थोड़ी सी किस्मत ना इंडिया के साथ लक चल रही है. रोहित शर्मा ऑलरेडी सीम्स अ बिट टायर्ड बिकॉज ऑफ नॉट द फिटेस्ट एनीमोर. आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा बात सिर्फ रोहित शर्मा की उस पर की है. फिटनेस पे. Oh, yeah, he's gonna hit. It's gone all the way 6 runs. Again, I think गर्मी थोड़ी है. रोहित काफ़ी देर से रन शन नहीं किए, भाग नहीं सकता. 16 बॉलिंग पे सिर्फ 12 रन किए हैं, तो वो हिट करेगा ही करेगा. और अगेन इतने टैलेंटेड बैट्समैन को अगर आप हाफ ट्रैकर टाइप ना, तो वो डेफिनेटली हिट करेगा. नवाज, यस, ये जहाँ पढ़ के सीधा हो, ये नहीं खेल सकता, ये कोई बैट्समैन नहीं खेल सकता. दिस इज वेयर ही नीड्स टू बी. So 6 from that over, 9 runs from the over so far. रोहित 12 रन 17 बॉलों पे 6 के बाद भी स्ट्राइक रेट कोई खास नहीं है. अगेन ये पूरी तरह मुझे नहीं लगता बल्ले पर आई है, एंड दैट इज गोइंग टू बी टेकन. सो यस, सो रोहित wasn't really finding the middle of the bat, और एक और चांस लेते हुए विकेट गिर गई, which is excellent. 50 पे 2 and an excellent result for नवाज. वही बात है कि
ढीली ना करें उसको, देखो विकेट से बाहर आना पड़ा, बॉल थोड़ी पीछे की, did not get the middle of the bat, and Iftikhar made no mistake catching the ball. I really like this Pakistan team, guys. Just saying, like all the cricketers. एक तो अच्छा हसन अली का सिर्फ कैचेस ड्रॉप करके दूसरे मैचेस रहा है ना हमें, आई स्वेयर अगर लाइक ही इज नॉट अ बैड बॉलर, ही इज अ फाइटर, he's just too excited, he needs to work on his फील्डिंग एंड कैचिंग. कि चांस बनाने के बावजूद अगर आप गेम्स नहीं जिसमें चांसेस बनाने बड़े मुश्किल हैं, लेकिन सिर्फ फॉर एग्जांपल फ़खर जिस कैच ड्रॉप किया बहुत मुश्किल था, बट ओवरऑल इफ यू लुक एट फ़खर, एक्सेलेंट एथलीट, गुड कैचर, गुड फील्डर, बाबर का सेम, रिजवान आपका वो है, इफ्तिखार, शादाब, हारिस रऊफ, खुशदिल वगैरह, दीज आर ऑल गुड एथलीट्स एज वेल. और पाकिस्तान में आई थिंक दिस बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं टीम में होना चाहिए. लेफ्ट आर्मर शर्जील खान. नाउ अगेन यू नीड टू बी फिट. ये पाकिस्तान को अपना स्टैंडर्ड एक रखना होएगा. नाउ गूगल इज गिविंग अ 32% चांस ऑफ पाकिस्तान. थैंक यू गूगल, वी रियली अप्रिशिएट इट. But again, this is excellent in terms of के leg spinners कोई भी like if he has found his length which he is bowling to right now, इस पे बाहर निकले या कुछ करे तो मसला हो सकता है. बट शादाब को एक परफेक्ट स्पिनर्स की लेंथ पर चली गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुल नहीं होती कि बॉल स्पिन नहीं होएगी और आराम से आप शॉट खेल सकोगे, और बहुत ज़्यादा शॉट भी नहीं है कि प्लेयर को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए. सो उस तरह से देखा जाए सो इट्स वेरी गुड कि शादाब गुड लेंथ्स पे बॉल करा रहा है. Hope that can continue. So Jadeja has come in because I think the leg spinner की वजह से और left arm off spinner भी है. So maybe that was the reason. But I would be very interested to see how Jadeja approach. अच्छा, Jadeja is not actually bad for Pakistan because I honestly feel Jadeja doesn't do well in pressure situations. So having Jadeja on right now, even though leg spinner है, I feel he's going to, अगर इसने ज़्यादा हिट शिट मारने की कोशिश की तो अपनी विकेट देगा. अदरवाइज आई थिंक ये स्ट्राइक रेट वगैरह कुछ नहीं कर सकेगा. विराट कोहली फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव को एंकर करना पड़ेगा. दैट वाज as easy as you like, Virat, as easy. Again, excellent lengths. Excellent lengths. The batsman would have to take some kind of a chance to score against you if you're bowling those lengths. Either he और विराट कोहली की वीकनेस है लेग स्पिन, आउटसाइड एज देता है. This wasn't bad length, but line was down the leg side. Can tuck it away for a single. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर फर्ज करें hypothetically speaking, if Pakistan loses, I don't think there's going to be too big of a reaction from our क्या नाम लेते हैं पाकिस्तानियों का, कोई इतना बड़ा वो नहीं होगा. I think if India loses, because they have come into this match favorites, they have won, I don't know, 24 of the last 25 games since they were beaten by Pakistan in the T20 World Cup. तो इंडियन फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा वो हो सकता है. अगेन this could be out again. It is out again, and Virat Kohli is out of here, out. Come on. Pakistani team seems very ecstatic. Hard luck, Virat. Virat was playing well, but again, this pitch isn't as easy as it seems. Excellent figures for Nawaz, 2 for 9. वही बात, अच्छी लाइन लेंथ कराओगे तो, और अगर बैट्समैन चांस लेगा तो ही कैन ऑलवेज easy take. And Pakistan is in the ground, loving it. A danger man departs from 35.
Again, 35 from 34. We might have a match on our hands, ladies and gentlemen. We might have a match on our hands. All of a sudden, Google thinks Pakistan is the favorite by 3%. Surya Yadav. This is the new generational batsman from India. I think number 2 in T20Is, which is T20 internationals. Pressure situation. I think his first game against Pakistan. देखते हैं लड़के में कितना दम है. Nawaz must have his tail up right now. He is on a hat trick. I like seeing Shadab involved. I think all these guys want to win. These are all of these lads have some fight in them. Or if Pakistan takes it to the last over and does well by the end of it, we have Shahnawaz Dhani to thank and Haris Rauf to thank, who got some crucial runs by the end of it. And there is a slip rakhi hui hai for the new batsman. Good ball, not a bad ball at all. These are the lengths that you need to be at. So if there are no balls, Pakistan does not give any extras, keeps excellent line and length. I think वो उम्मीद में था कि बॉल बाहर को निकलेगी और बाजू के साथ सीधी आ गई. हो सकता है, but again I think spin middle overs बहुत बड़ा टेस्ट होना था कि कौन सी टीम का probability जीतने की बेहतर हो जाएगी. Indians are usually good at spin. अगर spin वाले ओवर कंट्रोल कर लेते इंडियन टीम, so आवाज है. बैट नहीं था भाई, बैट नहीं था. I think he should. अगर बैट नहीं है, आपको नहीं पता बैट लगा है कि नहीं लगा, वरना अदरवाइज इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अभी रिप्ले जल्द दिखाएंगे तो पता चल जाएगा. बट अगेन नाउ प्रेशर में जडेजा जैसा प्लेयर भेज कर, बिकॉज आई डोंट थिंक जडेजा डज वेल अंडर प्रेशर. मैंने जितना देखा, मैंने जडेजा की क्रिकेट को इतनी नहीं देखी, बट this sweetly hit 6 runs by Jadeja. So Jadeja proving me wrong. जडेजा का मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, जो चैंपियंस लीग में पाकिस्तान जीता था, हार्दिक और जडेजा थे, और जडेजा दिस वाज फ्लॉलेस शॉट. बट यही चीज़ अगेन आई थिंक उसने आगे चार्ज करते हुए देखा, यही छोटी डाल देता थोड़ी सी, तो इट कुड हैव बीन, द सीन कुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट. इंडिया ने बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट अगेन थोड़ी शॉर्ट करा दी, थोड़ी सी शॉर्ट करा दी जस्ट बिकॉज पिछली बॉल पे नीचे आया था. जडेजा वाज अ स्मार्टर ऑपरेटर. अगेन वही बात कर रहा था कि ज़्यादा फुल हो जाए बॉल, वो भी यही करने की कोशिश कर रहा था कोहली. बॉल की पिच पे जाने की, हिट करना आसान हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह पिच पे नहीं पहुंच सके. जडेजा पूरी पिच पे पहुंचे. नवाज इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता तो खेलना शॉट ये मुश्किल हो जाता है. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी गोइंग. 46% पे आ गई तो पाकिस्तान has all of a sudden become favorites, but after that shot Google is giving Pakistan 44% still. will नहीं, single ही लेंगे. So 62 runs, or 62 runs in the first 10 overs. I think Pakistan has won the first 10 overs. India को मैं पहले power play, I think India won because they didn't lose too many wickets. But I think the next 4 over session, अगर आप 4 ओवरों में उसको गिनोगे तो वो I think पाकिस्तान को देना पड़ेगा. We're able to take 2 very crucial wickets.
एंड स्पिन को खेलना इतना आसान नहीं हो रहा. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि शादाब को, बिकॉज राइट हैंड बैट्समैन है, शादाब से अगला ओवर दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते. एंड व्हाट अदर ऑप्शंस, पुश्तिल शाह भी है जो लेफ्ट आर्म, बट नवाज के होते हुए व्हाई वुड यू वांट another off spinner to go for it? Then Asif Ali doesn't really spin the ball, right arm off spinner, but लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ कौन सा बॉलर आप यूज कर सकते हो? आई वुड वांट टू यूज समवन लाइक ए नसीम शाह, just because of his ability maybe to take the ball away from the left-handers might make things a bit difficult for Jadeja. Good pace as well. You never really know. But very frankly and very honestly speaking, अगर पाकिस्तान pressure रख सकती है इंडिया पे, so I feel not sure about Yadav, but someone like a Jadeja, I feel would. Like I love Jadeja's hitting. जब भी वो खेलता है, जिस तरह वो straight down the wicket और mid on की तरफ जो उसकी hitting stride, hitting area उसका बनता है, उसमें बहुत अच्छे shots मारता है. But I don't see Jadeja as someone who do well if the right pressure is applied. So let's see how he reacts. And he looks someone who's on edge, a bit anxious. India with a 58% chance, Pakistan with a 42% chance according to Google. Who do I think are favorites right now? Still have to give it to India right now. Still would have to give it to India right now because it's not a big total. If you can take this match to the last 5 overs with wickets in hand, if they do not lose, there are no any other major blows, तो वो नहीं होगा. बट देन अगेन समवन लाइक ए हारिस राउफ माइट हैव एक्सपीरियंस bowling एंड पे. धानी इज ऑल्सो गुड. सो Yunus also gives, like, I would never bring in Iftikhar because Iftikhar is not a frontline bowler. I still think जडेजा का कोई इतना कोई स्पेशल बैट्समैन नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की ना लेग स्पिनर पे वो हिटिंग करे. ट्राई, आई डोंट थिंक वो करेगा भी. एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, like, I think in terms of cricket intelligence, I'm so sorry Waqar Yunus, I respect you as a fast bowler, but sometimes I don't think you're the most intelligent strategist. Come on Shadab, good length again. इस length पे कुछ भी नहीं कर सकते. इधर डाली जाओ. अब वही बात है, like again, Hardik is someone I think he does excellent under pressure. This is also 4 runs. He has a famous sweep shot. I don't know he had a famous sweep shot, but got decent connection on that. Again, I do not mind him playing that shot. थोड़ा सा full ज़्यादा हो गया, but if he had missed, that would have been LB for sure. A little bit down the leg side, but that's all right. Now it's very important for him to come back with this ball and bowl a good ball over here. Momentum, जिस तरह हम पहले बात करते थे, बहुत important है. Yes, good. Dots. Waqar Yunus अपनी Fantastic player.
अच्छा, I haven't seen much of Yadav because I think IPL में ज़्यादा इंडियन क्रिकेट मैंने इतनी ज़्यादा फॉलो करनी बंद कर दी. IPL स्पेशली शुरू में जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते थे तो देखते थे, बट अगेन Yadav is very highly rated, so it's a good opportunity for Yadav to prove that he can do it against Pakistan as well, because it's another, I believe it's going to be another pressure level. So 11 overs gone, 69 for 3. India, last over with 4 and I think couple of singles or more than that was went for 7 runs approximately. 79 from 54. Still, you have to say India is still the favorite to win, because you can hit boundaries on this ground. It's just about finding the right ball. चेक करते हैं पाकिस्तान कितना प्रेशर रख सकती है. नवाज से कंटिन्यू कर रहे हैं, मे बी इस ओवर के बाद चेंज डालेंगे. अगेन टू शॉट, वेरी लकी. नवाज यू नीड टू बी अगेन. अब Surya Yadav, from what I've seen, seems to be a decent batsman. It's very important for Nawaz to see कि कब ये आगे आएगा, कब ये चार्ज करेगा, कब ये पीछे रहकर करेगा. I hope इन लोगों ने इस पे कोई वर्किंग वगैरह की हो बैट्समैन पे. Again too short. So नवाज थोड़ी सी तेज आई थिंक बॉल कराने के चक्कर 97 किलोमीटर पर, which is quite pacey for a left arm off spinner. So Yadav, second best strike rate 175 in T20s, and second highest individual score 170. So he's a scorer who scores a lot of runs and scores them fast. Let's see what Jadeja can do. On the other hand, Jadeja has scored 9 runs from 6 balls, which isn't too bad. Oh, stroke. So again, bowling it too full to Jadeja in his arc, and he plummets it straight down the ground for 4 runs. Probably Nawaz went too fast for him to get anything behind it. Between his legs for 4 runs. Again, I think अच्छी line length कराओ, और आई थिंक उसको चार्ज एक आधी दफ़ा कर चुके, तो थोड़ा सा ना वो घबराया हुआ भी. अब टू शॉट नाउ, एंड अगेन पाकिस्तान हैज़ बिन lucky in that sense. See, Jadeja gets a bit excited, so I don't mind having Jadeja on the crease, to be very honest. I think it's time to take Nawaz out of the attack, because या बहुत शॉर्ट या बहुत फुल करा रहे, you need to find your lengths. Nawaz needs to find the right length, and if India does not lose, Pakistan were 86 for 2 at this stage, and they started losing wickets because they were trying to accelerate. So अभी इंडिया को पता है उनको accelerate इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, because again 8-9 runs per over is not very difficult in the modern game. Well done, Rizwan. So again 7 runs from that over. India are consistently doing now 7 runs. Still a ball to go, I believe. Yes, still a ball to go. But Pakistan were 10 runs ahead at this stage, and honestly, Pakistan should have been targeting something like a 160 to a 180 at this point. So we're 20 runs short, and India is on course. So 8.8 is not a difficult run rate to be required, especially again short, again too short, and again very lucky that is just a single, right? So Nawaz needs to be taken out of the attack. That was, I feel he was very lucky कि
पे और रन नहीं पड़े. आई थिंक इंडिया वाले अभी भी दे डू नॉट, अभी दे आर प्लेइंग इन अ गियर दे डू नॉट वांट टू एक्सेलरेट एट दिस टाइम. So the score is 77 for 3 in 12 overs. India needs 71 runs to win from 48 balls. Pakistan would need to take wickets. I think uneven bounce इस stage पर on होना शुरू हो गया था. Fast bowlers, I think Shadab, he's bowling Shadab through, which Shadab अक्सर ऐसा होता है, which is not a bad idea. Not a bad idea at all. I hope Shadab can put in one more good over. That's not a bad length. That's not a bad length. And इधर ही outside the off stump ही इसको करानी चाहिए और leg spin भी proper होएगी और off stump पर होएगी, so it goes in like इसी लेंथ से आप अंदर बाहर दोनों तरफ. लेकिन इंडिया has been very lucky कि outside edges या इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई. I would say good 2 dot balls to start the innings. जडेजा is someone again, ये हिट मारेगा और हिट मारते हुए ये विकेट दे सकता है. चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर आपने देखा हो, जडेजा और हार्दिक थे, हार्दिक मार रहा था, जडेजा ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पुट ऑन किया था. अगर उस पॉइंट पर ये बेहतर खेलता तो शायद, बट दैट वाज सच अ वन साइडेड विक्ट्री एंड इवन द T20 वर्ल्ड कप, अब कुछ उस पर कह नहीं सकते. बट अगेन ढीले बॉल करा दी इस पर. आई थिंक दे विल एटलीस्ट टेक अ सिंगल विच दे ईजिली डू. Off stump length just outside the off stump, leg spinner wrong one, जो like so जो bowlers, जो batsmen especially जो conventional technique से खेलते हैं, उनके खिलाफ conventional lines और lengths, अच्छी good lines और lengths काम करती हैं, because उधर ही उनको trouble होता है. बॉल जिसमें थोड़ा सा इनको reach करना पड़े, like so basically ऐसी बॉल जिसपे ये बहुत ही ढीली. I'd be surprised if that good fielding, I think, should stop it for 2. ढीली कराई थी. Very lucky in terms के इस पे चौका नहीं हो सका. So India has been unlucky that they haven't been able to score boundaries of these balls. This was completely a boundary ball. But at the same time, Pakistan has been very unlucky. I feel another day Pakistan would have gotten 2 to 3 more wickets because of the outside edges and क्या नाम लेते हैं, we weren't able to, like, बहुत ज़्यादा beat किया है और wicket नहीं गिरी. And this is much better length. You can only put you down, maybe try for, yeah, maybe I think they would run easy too. Finish your spell strong, Shadab. He's gone for 18 runs in his 3.5 overs. Last ball of his shift, Shadab has bowled really well. Unlucky not to have gotten a wicket today. अब again मैं नवाज से नहीं, but नवाज का फिर ओवर एंड के लिए बचाना ऑफ स्पिनर. You can probably have him bowl an over later on, or maybe find another over from somewhere else. So let's see, बैट्समैन को भी देखते हैं कि करने की क्या कोशिश कर रहा है. काफ़ी लंबा स्टांस, इन द सेंस के स्टैंस लंबा खड़ा होके खेलता है. और जिस तरह युवराज सिंह का आपको देखा था, बैकलिफ्ट अच्छी थी. तो हाँ, रेगुलर बैकलिफ्ट कोई इतनी नहीं, बट शादाब डज वेल. 19 ऑफ हिज 4 overs, 6 runs on that over. एक बॉल गंदी कराई थी, he was lucky, but also beat the outside edge and unlucky not to get a wicket. Shadab, but well done, Shadab. You've played well. He's definitely put in a shift for the team. And now it will be very interesting to see if नवाज से ये कंटिन्यू करता है कि नवाज के ओवर पूरे करवा देते. But then you're only left with 6 overs and you have 4 bowlers, 3 bowlers, 3 fast bowlers. So you basically do not use any of your part-timers. I think नवाज से सिर्फ इसलिए अभी कराया कि आगे जाकर बाबर would be just a bit afraid कि क्या नाम लेते हैं हिटिंग वाले टाइम पे. But I have a feeling
Pakistan were 90 for 3, India 83 for 3. And this is the point where एक दो हमने 2 रन के ओवर और इस तरह की चीज़ें हुई थी जब विकेट्स गिर रही थी, राइट? सो ऑल ऑफ अ सडन विकेट्स इन दिस सेशन इंडिया वालों ने बहुत ज़्यादा विकेटें ली थी, और देखते हैं अगर पाकिस्तान वाले विकेट्स ले सकें एट दिस टाइम. और आई होप मेरी बैटरी 7 ओवर के लिए लास्ट चले जाए, अगर नहीं चली तो विल पुट इट ऑन चार्ज and come back later. He's bringing Dhani back in. He would still have to find that 1 over. Nawaz ने बहुत ढीली कराई है आखिरी जो ना. So Nawaz has gone for 26 runs in his 3 overs, which is a bit much. You can also like see. So Nawaz has gone for around 9 runs per over, which is pretty high. I would like to see. I like Dhani. Dhani is. Oh, what happened there? What the hell happened there? It's fine, he got a hand to it. Was that a shot? But again, going back to that, and have we got to keep it short here? Because this is a fascinating topic, and for me, it's not about an individual player. It's about a policy or philosophy of the side. Whether you. But I really like Pakistan's energy. I feel it's a young, talented side. It's just about doing a few things right, which this team I hope can do and achieve. Yeah. So this is something that Dhani would be able to do. और fast bowlers को खेलना इतना आसान नहीं है. And we have 3 very good fast bowlers. नसीम शाह का मुझे नहीं पता कि how good he is at bowling at the death. End वाले overs कराना में कितना अच्छा है. But I feel Haris is pretty decent, and also Dhani can generate a bit of bounce and a bit of pace. So he is no. Dhani. I wonder what would Dhani try, like. Go for it, Babar. If Rizwan is saying that's going to be interesting, it's going to be a bonus wicket जिस तरह फखर की हमारी गिरी थी. He's gone for the review. Did not seem like it, but Rizwan seems to think there might be something on it. Jadeja seems pretty relaxed. So. नहीं, नॉट आउट कह रहा. Can't really see anything from the replays. But I think बॉल गुजर चुकी थी जब तक उसका ना. Actually, okay, you can call it a flat line. There's no massive version, but there was just something I'm not sure with now. Anyways, Pakistan lose a review there. Still have a review in hand, Pakistan. Yeah, it was pretty close to the gloves though, but nothing on the third umpires. Given is not out and fairly so, I guess. Come on, Dhani. Again, it's good to see Jadeja jumping. That means there is a bit of bounce in the pitch.
And at some point, India would need to make a call on when they were going to accelerate. The run rate has gone up to around, the required run rate has gone up to around 9.5 now. India are still favourite because even higher run rate doesn't matter. It is about when they decide to accelerate, how difficult is it going to be to play their shots to fast-paced bowling. Sounded good off the middle of the bat, but again straight to the fielder. I think इस pitch पे अगर आप conventionally खेलते हो तो you like, that's why I feel like if Babar Azam would have stayed for longer, he could have scored, Pakistan could have gotten to a better total. I think at least 20 plus runs और हो जाते हमारे conventional. But the second you try and play unconventional cricket, थोड़ी सी आप क्रीज में हिल रहे हो या अगेंस्ट द लाइन जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, तो इस पिच में बहुत मुश्किल हो रही है. आई होप इट रिमेन्स द सेम. देयर इज़ नो ड्यू लकीली, जो एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट वी नो एंड हैवंट सीन टॉवल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. रिलेटिवली ड्राई लग रहा है ग्राउंड, जो वही सुनने में आ रहा था. एटलीस्ट दैट मेक्स इट मच मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट. अगेन, as long as they're banging the ball in, it's not going to be very easy for them to score runs, the batting side to score runs. So it's going to be interesting. एक point पे इनको decision लेना पड़ेगा कब हमने accelerate करना है. अभी run rate आ चुकी है 9.7 पे. So I think after the 15th over, to make things interesting, I think नवाज को शायद ये दूसरे एंड से बोल दी ऑफ स्पिन. लेट्स सी, क्योंकि आई थिंक चांस अब लेंगे और तब आई वुड लाइक मे बी नवाज टू कम इन. सी पाकिस्तान, इवन इफ दे वेंट लाइक एट अ डिसेंट रेट एट दिस टाइम, 160 तक किया जा सकता था. बट luckily the match wasn't one sided. It's still in somewhat of a balance at this stage. Again वही चक्कर, हिट करने की कोशिश की अंदर बाहर थोड़ा सा, एंड इट्स ऑलवेज रिस्की. अभी धानी 140 करा रहा है. ही कैन इंक्रीज हिज पेस एज वेल. जस्ट 6 runs फ्रॉम दैट ओवर. लेट्स सी अगर हारिस को देते हैं अगला ओवर, नवाज को दूसरे एंड से लेकर आना, रिदम वगैरह डिस्टर्ब ना हो जाए. एक ओवर खरीदना पड़ेगा. पाकिस्तान वुड नीड टू बाय 1 over. आइदर नवाज नीड्स टू have more game awareness. ढीली बॉलें उसने बहुत ज़्यादा कराई थी अपने लास्ट ओवर में. someone like वकार यूनिस की एडवाइस लेकर इफ्तिखार से, बट इफ्तिखार वो वाली ऑफ स्पिन कराता है जो दुनिया का हर बॉलर अगर राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो सके. नसीम शाह अगेन आई थिंक हैज़ गुड पेस. धानी के 3 हो गए. आई थिंक अब नसीम से एक कराना चाहिए, और फिर मे बी हैव एन हारिस. डू नॉट लेट देम सेटल डाउन टू एनी वन बॉलर. और फिर दे वुड हैव टू फाइंड 1 over कहीं ना कहीं. खुशदिल पे चांस ले सकते हो. आई एम नॉट श्योर किसकी बॉलिंग फॉर्म अच्छी है. दैट्स अ डिसीजन द कैप्टन वुड नीड टू मेक, और दैट कुड बी द डिसीजन जो मैच डिटर्मिन करता है. अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग कराना है तो आई थिंक अपने जो फ्रंट लाइन सारों से कराकर आखिरी ओवर मैच करना, नवाज को दे दो. मे बी नवाज को मैंने आई थिंक देखा है 1-2 मैचेस में आखिरी ओवर डालते हुए. सो मे बी ही इज़ यूज्ड टू दैट. तेज बॉल फेंक तो देता है, बट विद द लेफ्ट आर्मर स्टिल मुझे नहीं पता नीचे इनका हार्दिक आता है, और पांट भी आई थिंक राइट हैंडेड है अगर पांट खेल रहा है. आई एम नॉट श्योर. कार्तिक भी अभी नहीं आया. कार्तिक भी कन्वेंशनल, सो नॉट हितिक. आई थिंक पांड्या के अलावा तो इनका सच हिटर भी नहीं है. हार्दिक पांड्या इज समवन दैट अगेन बिकॉज दे हैव विकेट्स इन हैंड, they might go a bit aggressive and be willing to lose a few wickets at this stage. Now what Naseem needs to do is bowl very good. So wasn't really, I think was feeling Naseem for pace.
फुट मूवमेंट वगैरह कोई उस तरह की चीज़ नहीं थी. The run rate has gone up to more than 10 runs per over now. So India with a 54% chance of winning the game. They're definitely the favorite, 59% on Google. Is India still the favorite? It depends. अब play पे depend करता है. जब एक point पे India would have to hit boundaries, and that's what I was saying. At one point in time, they would have to decide when they were going to be aggressive. Or ये इसका I think he has pulled something. He has pulled something, and I hope it's not too bad. But another wicket, and only 10% battery remaining, guys. Top of the off stump. Interesting game. Let me just go and get the camel. और अगेन मुझे नहीं पता इंडिया किन के खिलाफ क्रिकेट खेलती रही है जो बहुत ज़्यादा मैचेस जीती. आई एम श्योर जीती होगी. आई एम श्योर इंडिया की टीम अच्छी भी है, बट स्पाइनलेस बॉलिंग वो डिफरेंस एनी क्रिकेट व्यूअर वुड बीन एबल टू टेल कि अभी भी आई वुड स्टिल थिंक इंडिया कैन स्टिल विन. इट इज़ डिफिकल्ट. It won't be a walk in the park for them. Someone like Hardik could come in and take away the game completely, but they do not have a strong bowling lineup. Which is come on, Asim. I would say, was there a bat on that? Naseem Shah has been excellent with one more over to go. Oh, such a beautiful wicket. भाई अपने फोन लाए फोन पे अपने ना वो डाउनलोड कर ले 5% बैटरी रह गई आई थिंक. वो जो सॉफ्टवेयर मैंने नहीं किया हुआ जिससे फोन पे कैप्चर करके वो आ जाता है. ये कैमो कह रहा है. कैमो हाँ. Again down the leg side, Naseem off stump के बाहर. So again it's not the end of the world जितना इंडिया वालों ने वो बनाए हैं, but you can see a lot of cricketers जिनको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं. गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन की वजह से क्रैम्प्स होते हैं, मसल सीज अप कर जाता है. Naseem Shah probably would still have been in the side अगर Shaheen Shah खेल भी रहा होता. I think Dhani would have been left out, but an excellent debut. He is an excellent bowler. Action बहुत ही खूबसूरत है, pace भी बहुत अच्छी है. Just needs to know the right line and length और develop किया जाए तो he can be great bowler for Pakistan for the future as well. Now Jadeja would be slightly under pressure. जिस तरह बात करते हैं Jadeja, I have never seen Jadeja as a pressure player. I don't want to be proven wrong today. Hardik seems to be smiling, Hardik is someone who has the ability to hit and hit big. So he could definitely be a match winner for his team today. And again, excellent shot by Hardik, 4 runs.
और मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि 132 पे ढीली बॉल इस टाइम पे क्यों कराएगा नसीम। उसने या कटर की है या स्लोर वन करने की कोशिश किया, कुछ इस तरह की चीज़ की है। The run rate remains, required run rate remains the same, around 10 runs per over. India 97 for 4. I think determining factor, the match is literally now 50-50 by all probabilities. With someone like a Hardik, और हार्दिक अगर खेल जाए एंड तक, so I wouldn't be surprised अगर if Hardik, let's be honest, if Hardik is there till the end, then it would be India's match to lose. Because Hardik would not Okay, Dhani is going to end his overs. So strategy बाबर ने जो अपनी रखी हुई है with the team वो ये है कि धानी अगर अपने 4 पूरे कर लेता है तो पीछे रह जाते हैं हारिस के पास 2, 4 ओवरों में हारिस के पास 2, नसीम का 1 और नवाज का 1। तो धानी से अपना ये पूरा करा रहा है। धानी का हैज अ लॉन्ग रन अप। अगेन जडेजा will just be playing anchor, will just be trying to give the strike to Hardik. Hardik versus Dhani. Look at that. Hardik is very talented. Again, अच्छा पेस पता नहीं थक गया था, क्या हुआ था। You can't really blame the point fielder for missing that. Was hit really hard. But 130 की जगह यही बॉल 140s में होती तो it would have been much more difficult to execute that shot. और अगर हमारा कैमरा ऑफ हो जाए तो प्लीज आप लोग हमें in that's not bad. Let's try and keep Jadeja on strike because I don't think Jadeja can. So if India आज जीतेगी तो हार्दिक पांड्या would be their person. It's a good time for Hardik to come with just 5 overs to go. If Hardik had come in earlier, then I think this is the perfect tailor-made situation for Hardik. It is 50-50. It is 50-50. It's going to be, we're very lucky that we're getting a close match. Again, जडेजा का इतना इशू नहीं है, सिंगल करता रहेगा। I just hope कोई नो बॉल्स, कोई एक्स्ट्रास, कोई इस तरह की BS नहीं होनी चाहिए। गर्मी है, 6 बॉल डालने हैं और 6 के 6 बॉल पूरे डालने हैं। Fans seem a bit tense. It's going to be straight to the, not straight to the fielder, but still I feel come back for 2. Hardik really hits the ball hard. और अगर इंडिया आज मैच जीतेगी तो Hardik would be there. So after 15.4 runs, Pakistan were 109 for 5, and Pakistan did not obviously complete their 50 overs with a ball to go. Dhani was bowled by the left arm sluggish slow bowler. Oof, that's just going to be 1 run. Any luck?
यार I'm not sure अगर इंडिया की आगे प्लेस टू दिनेश कार्तिक इज द ओनली बैट्समैन रिकग्नाइज्ड बैट्समैन. इसके बाद दिनेश कार्तिक इज आल्सो समवन जो टॉप ऑफ द ऑर्डर आता है और कन्वेंशनल खेलता है. सो आई डोंट थिंक इससे रिजवान कम ऑन यार, come on yaar, can't be giving away extra runs. I hope that's not a wide. Please do not give it a wide. Please say, oh shit. These are things that piss me off, right? I'm not sure if it's a lack of concentration. Again, that could have been out on another day. Giving away free runs. So they've given away 3 runs extra. So just think of this as a boundary. Rizwan seems to be. I wonder if this is going to play a big part. So again, it remains at 10 and over with 4 overs. Any runs on this ball would be a bonus. And he is able to hit it well, but straight to the fielder. Shouldn't be more than 2, even if they scramble, which they don't. Just 1 run. So technically चौका पड़ा आखिरी बॉल पे जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी. 10.3 required of the last 4 overs. Dhani has been bowled out. He went for 30 runs, which isn't too bad. Yeah, that's around 7.5 runs, जो I think average भी है for the match. So it really comes down to Haris अपने 2 ओवर कैसे डालता है. Haris can be a bit expensive but could also be a little hard to hit. It would be able to come down to के पांड्या के साथ कि पांड्या के खिलाफ कौन सा बॉलर can beat him in that battle. जुल्फी आपको क्या ख्याल है, कोई तबसरा मैच में? पाकिस्तान जीत जाएगा? तुझे लगता है जीत जाएगा? नहीं, लाइक ये तेरा अंदर से पाकिस्तानी कह रहा है या क्रिकेटर कह रहा है या तेरा कोई लाइक पेट्रियोटिक जवाब है कि ये पढ़ा लिखा सेंसिबल जवाब? स्टैट्स बता रहे हैं. अच्छा, स्टैट्स में तो दिखाता हूँ 1 सेकंड. वो कह रहा है इंडिया 62% चांस गूगल अभी और पाकिस्तान का 38% चांस जीतने का. मैच की जो है अभी फिलहाल वो फील जो है लगता है ऐसा कि पाकिस्तान जीतेगी. मसला है सारे प्लेयरों को हो रहे हैं क्रैम्प. फास्ट बॉलर्स सारे प्लेयर्स को, बस रिजवान को भी क्रैम्प्स हो रहे हैं, हर किसी को हो रहे हैं. तो उसकी वजह से और 10 रन पर ओवर T20 में कोई खास मुश्किल चीज़ नहीं कंसिडर होती. ये देखें इसका क्रैम्प हो रहा है, नहीं करा सकते. तो दिस कुड बी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है. ओवर प्रैक्टिस तो नहीं कर ली लड़कों ने. आई थिंक कार्तिक टाइप प्लेयर के लिए बहुत ही मुश्किल होएगा अगर आप विकेट गिरती है आकर करना गेन डाउन द लेग साइड एंड ऑल्सो गिव एन एक्स्ट्रा रन. सो और कुछ होना हो माइट बी रिजवान्स और टावल भी निकल आया है, मतलब हो सकता है शायद ड्यू पड़ रही हो. डिड द बॉल स्लिप, स्लोअर बॉल कराने की कोशिश. अच्छा जी, इंटरेस्टिंग चीज़ जुल्फी साहब ये है कि अगर ड्यू भी पड़ रही है फ़र्ज़ करो और क्रैम्प वगैरह भी हो रहे हैं, तो उससे सिर्फ एक चीज़ जो ख़तरनाक हो सकती है वो ये हो सकती है कि एकदम से बॉल बल्ले पर आने लग जाए
क्योंकि ड्यू जब होती है तो बॉल स्किड करती है तो हिट करना आसान होता है, बाउंस नहीं आता उस तरह करके। और दूसरी चीज़ जो क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहे हैं उसकी वजह से जितना तेज़ या जितना अग्रेसिवली बॉल डालने की कोशिश करेंगे शायद उस तरह होएगा नहीं। ऊपर से रिजवान कभी भी रेयरली कोई मिसफील्ड या कोई इस तरह की चीज़ करता है, 2 मिस कर चुका है। Judges. पीछे टेक्स 2 डॉट बॉल बैक टू बैक। गेम मोर देन डॉट बॉल से ज़्यादा है विकेटों की और बाउंड्रीज की। हारिस रऊफ इज रियली पुटिंग इन अ शिफ्ट, बट एक भी बॉल डीलिंग करा, लाइक एट दिस पॉइंट हर बॉल मेजर्ड होना ज़रूरी है। आप 2 रन 2 बॉलों पे दे चुके हो, पहली बॉल आपने वाइड कराई, सो दिस वाज अ बोनस एट दिस स्टेज। अगर सिर्फ ऑफ स्ट्राइक पे चला गया, गुड हिट, बट अगेन एंगल्स कवर्ड, 2 रन ले लें फिर स्ट्राइक पर आ गया। सो जो जडेजा है उसको हमारे फास्ट बॉलर के खिलाफ हिटिंग करते हुए इतना आसान उसके लिए नहीं होएगा। 10 runs per over required है। हाँ, 10 से ऊपर 10.5 रन पर ओवर रिक्वायर्ड है। लेकिन ये जो हार्दिक है ये पेस बॉलर्स अच्छा खेलता है, एग्रेसिव भी खेलता है और स्ट्राइक रेट वगैरह हर चीज़ लाइक अच्छी है। सो ये डिटर्मिन करेगा कि इसको अगर आउट नहीं कर सके या इसने स्ट्राइक अगर ज़्यादा रखी तो मुश्किल हो जाएगा। बट अगेन हारिस रऊफ कन्वेंशनल फास्ट बॉलर है। जो मसला ये है, IPL खेलते हैं या इंटरनेशनल मैचेस वगैरह में खेलते हैं ना, बहुत कम टीम है जिनके पास बहुत ज़्यादा पेस है। अगेन एक अजीब किस्म का रोमांस चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयरों के दरमियान, कुछ समझ नहीं आता। अभी तक बहुत ही अच्छा ओवर डाला है। अगेन हार्दिक भी जडेजा को यही कह रहा होएगा कि विकेट इस टाइम पे लूज करना वुड बी मोर डेंजरस। अगेन वुड बी गिवन एज अ वाइड डाउन द लेग साइड। इट्स ओके। 146 थी, हार्श थी थोड़ी बॉल, डाउन द लेग साइड थी, बट लिटरली लेग स्टंप से अगर आप देखोगे तो इतना डिफरेंस नहीं होगा। हर कोई अपना ना वो स्ट्रेचेस वगैरह हर चीज़ कर रहा है, सारों को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। इंडिया इज द फेवरेट एट दिस पॉइंट। Even the doubles would hurt a lot. आठ रन हुए इस ओवर में, जिसमें से जहाँ तक मेरा ख्याल है 3 रन वाइड्स के हुए हैं, एक्स्ट्रास के हुए हैं। दैट इज समथिंग पाकिस्तान वुड नीड टू वर्क ऑन। अगला ओवर इसको फिर से नसीम शाह को देना पड़ना है। इस टाइम स्पिनर्स को नहीं मिला यार डिपेंड करता है ना, एक स्पिनर का ओवर रहता है, कभी ना किसी पॉइंट पे तो आपको स्पिनर को लेकर आना पड़ेगा। नहीं डाउन द लेग साइड पिच कर रही है हारिस, आर यू गोइंग ऑन अबाउट बड़ी? ओके, सो someone either needs to bowl 9.7 required. क्रैकर ऑफ एन ओवर, तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का ओवर निकाले कोई। अब वो टीम की डिस्कशन हो रही है, 3 ओवर रह गए, हारिस का 1 ओवर रह गया, 1 ओवर रह गया नसीम शाह का, और 1 ओवर रहता है स्पिनर का जो है नवाज, या किसी और स्पिनर से कराएंगे। अब जुआ इस चीज़ पे लगना है, पीछे रह गए रन कितने 32,
एक बड़ा ओवर जो होता है 15 रन से 20 रन का ओवर और गेम खत्म। 32 in 18 balls. तो नसीम को दिया, नसीम को दिया है, फिर मुझे लगता है हारिस को देंगे और आखिरी ओवर फिर स्पिनर पे रिस्क लेंगे, एंड तक लेकर जाएंगे। सलमान खान लोग लाई चेक कर, जो ज़रा सेंसिबल इंडियन फैंस हैं अभी डांस वगैरह से गुरेज कर रहे हैं। खुशी इस बात की पाकिस्तान मेड अ मैच आउट ऑफ इट, इजीली जाने नहीं दिया। इस ओवर के बाद जुल्फी कैमरा चेंज कर लेंगे ब्रेक में। ये इस पे वो कर लेना, sign in। साइन इन होता है, साइन इन तो नहीं किया लास्ट टाइम, डायरेक्ट नहीं हुआ। नहीं तो वो तुम्हारे अकाउंट से होगा। नहीं यार, लास्ट टाइम ने कैसे किया, आप करके नहीं कर चल गया था। गूगल तो साइन इन, यूट्यूब तो साइन इन करोगे ना? नहीं, इस पे तो नहीं करूँगा यूट्यूब साइन। ऑफ कोर्स करोगे, किस तरह से, उसमें किस तरह जाएगा फिर? तार से नहीं कनेक्ट होएगा, हाँ ठीक है, वो उसमें साइन इन तो उसमें होगा ना। साइन इन उसमें, ठीक है। और हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि वो स्पिनर को ही मारेंगे, नसीम और हारिस को नहीं मार सकेंगे रन फॉर रन्स। वो भी अजम्पशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। और लेफ्ट एक चीज़ जडेजा के होने का फ़ायदा उनको, जडेजा खेला है 21 बॉलों पे 24, विच इज़ नॉट बाय एनी मीन्स एक्सेलेंट, बट लेफ्ट राइट आर्म की वजह से जो एक्स्ट्राज दी हैं पाकिस्तान ने वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम। क्यों भाई, किस चीज़ का? बिल्कुल सही बहुत थी। नहीं यार, कम ऑन, दैट डिड नॉट सीम दैट हाई टू मी। लेट्स सी द रिप्ले। Was a bit high. इसके बिना, yes. The players seem to be cramping up a lot. That is unfortunate. I think बड़े मज़े के मैच में से थोड़ी सी जान चली गई है, just because so again एक ओवर की गेम है। Again, this is not a pressure situation, so even 4 runs. कितनी पेस are really interesting, कितनी पेस करा रहा है अभी इस टाइम पर 134, yes, so that's a big issue, क्योंकि because I think कि body cramps वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ हो रही है उसकी वजह से लोग पूरी जान से बॉल नहीं डाल पा रहे, and that was a relatively easy hit. So again, just with that one boundary, ज़रा सिनेरियो सिचुएशन ज़रा हिल गई है और India has become a definite favorite without doing anything extraordinary. That's the beauty of it. And again, वही बात है कि it's very difficult to see also for all these bowlers. सारों को क्रैम्प्स हो रहे हैं, एक्सेलेंट बॉलिंग बाय नसीम शाह टुडे। आई थिंक जो बाउंड्री अभी दी भी है वो भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि
It's very hard to see also. It's very hard to see. काफ़ी ज़्यादा struggle कर रहे हैं. वो कुछ भी नहीं कर सकता. It's very hard to see and very unfortunate. और शॉन टेट का भी बीच में दिल कर रहा है, जो बॉलिंग कोच है बाय द वे पाकिस्तान का, कि इनको वापस बुला लिया जाए. नहीं यार, वो चेक करके अगर फुल स्ट्रेंथ पर होते तो एटलीस्ट वो चेक आउट दे दिया और वो फॉरन रिव्यू करेगा. प्रॉब्ली पिचिंग डाउन द लेग साइड, आउट नहीं होएगा. सिंगल शायद काउंट हो जाए. गलत डिसीजन जहाँ तक मेरा ख्याल है. आई थिंक वाज पिचिंग डाउन द लेग साइड फर्स्टली. I think नहीं, पिचिंग डाउन द लेग साइड, उसके अलावा इतना मसला नहीं था. टप्पा आई थिंक डाउन द लेग साइड खाई है. नहीं, कोई उस तरह करके इशू नहीं हुआ है भाई. जस्ट पिच डाउन द लेग साइड. शायद अंपायर्स कॉल हो जाए, बट पिचिंग आउटसाइड लेग. पिचिंग डाउन द लेग साइड, आउट नहीं हो सकता. एंड यू फील बैड फॉर द बॉलर्स. आई थिंक प्रोफेशनल हैं, कंप्लीट करेंगे गेम, बट अगेन दुबई में नहीं पता कर लोगों को, तो पीक गर्मी सीजन है. इट्स नॉट लाइक इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग नहीं कराई. मैच फिनिश करेंगे, डेफिनेटली फिनिश होएगा. मैच बहुत टाइट, और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस तरह के डिलेज की वजह से मैच जो एक बहुत मज़ेदार होना था, उसमें से थोड़ा सा मज़ा कम हो जाएगा. You can't really blame the bowlers, you can't blame the batting side. Everyone wanted a game, but at this point, I feel don't want to see any of these players seriously injured. You can actually see उसके 2 बॉलें रह गई उसकी. और आई थिंक अंपायर ने भी आउट शायद इसलिए दिया हो कि रन ना काउंट हो. क्लोज डिसीजन. whoever wins wins, whoever loses loses. पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फाइट डाली है. Really happy to see, especially the paces showing that true pace is very difficult to play, no matter. And he's gonna not bowl 100% definitely. Like तो you know, like again, India might or is most likely to end up winning this game now. Just 21 needed of 13 balls. वही चीज़ अगर आप पेस भी देखोगे, आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा पेस पे बॉल आई है, बिकॉज वो
ये आया. इसको किस तरह घुमाया था? इधर से ही होगा रोटेट का ऑप्शन कहीं पे. ये रेजोल्यूशन नहीं है था. पता नहीं उसमें तो नहीं कौन है? घुमाया था. उसके अंदर तो नहीं किया था हमने. आई थिंक हमें फिर से ना इसको दोबारा से ऐड कर लो करना ना. पड़ेगा. ये ऐड कर लो ना यहाँ से. वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड कर लो. ओके करो. नाम के डिवाइस का यही है बस मेरे ख्याल में. अब यहाँ पे ऑप्शन होगी रोटेट की. एक मिनट. hello hello, hope you can hear me. आवाज़ कर. आवाज ऑन चलते रहिए. Chowka. That would be 4. That could have been stopped. Need 15 of 9. Still a competition, guys. I don't think this match is as done as a lot of people might like to think. I think there's still a lot of game left in this match. If that makes any sense. This is another strong hit and another 4 runs. So Hardik doing a job for India, which is not good to see from a Pakistani perspective, but generally good for them, I guess. In थोड़ा सा loose ball body पर I think they should try and keep it outside the off stump as much as possible. Body पे कराने, it needs to be a more bouncer-esque delivery. No. One of the over, yes. So if without much damage we are able to go to the last over with 11 required, at least there's going to be some drama.
dot, single, double. I think single would be ideal. I would rather have pretty short. He jumped. Very good take by Rizwan, by the way. Good jump by Rizwan. See, अगर wicket गिर जाती है, I would go for a Yorker middle stump somehow. Like, I know it's hard to execute, easier said than done. Bowls it on the body, 4 more runs. That's a bit disappointing. So just 7 runs from the last over. India definite favourites now. I feel another 20 runs and this would have been a completely different game. But I don't think it shouldn't feel too hard done. Again, a bit too short. Full ball, एक पीछे खड़ा है, वो वेट कर रहा है जैब के लिए. Again, I think that was the over that changed the perspective of the match. Indian fans seem to be very happy, which is good to see happiness all round. I think इतना ज़्यादा disappoint होने के मैच के रिजल्ट पे ज़रूरत नहीं है. बैटिंग में पाकिस्तान थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी. बॉलर्स बहुत ज़्यादा वीक थे उनके और उसका एडवांटेज लेना चाहिए था पाकिस्तान को. बट एट द सेम टाइम आई फील बॉलिंग कराते हुए जो क्रैम्प्स और इंजरीज और इस तरह की चीज़ हुई है, विच इज़ अ गेम, उन्होंने भी पूरी बॉलिंग कराई है, उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम पाकिस्तान का ना स्पॉइल डेफिनेटली हुआ है. एक्स्ट्राज पे जो रन आपने वाइड पे 4, 5, 6 रन, अगेन इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी विद, बट मेरे एक टीचर कहते थे कि हिस्ट्री में इफ्स और बट्स नहीं होते, जो हो गया वो हो गया. So left arm off spin Nawaz. Let's see, it would be a miracle over. Jason had one big hit to seize the game. He will definitely be trying to go for that hit. Every ball needs to be planned, and he has bowled him off the first ball. New batsman coming in. और again Haris आखिरी बॉल अगर बेहतर डालता, इतनी लूज उस पर ना डालता तो ये मैच काफ़ी डिफरेंट उससे फंसा होता. अच्छी बात है हार्दिक इज स्टिल ऑन द अदर साइड, और उसके अलावा जडेजा, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये प्रेशर का प्लेयर नहीं है, ये सुकून का प्लेयर है. इसको हलवा बना के मैचेस तो ये बड़ा अच्छा खेलेगा. Keeps on proving me right. Still, it's not over. India definite favourites still to win. They only need 7 runs from the last 5 balls. This is what, just one hit, और वो hit कोई भी मार सकता है, especially against a left arm off spinner. Shouldn't be too difficult for India, but again choke कोई भी टीम कर जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते. Nawaz would emerge as a huge hero if he is able to somehow pull this off. Highly unlikely, but honestly speaking, अफसोस बिल्कुल भी नहीं हुआ इस मैच का. लाइक टीम अच्छा खेली है, वैसे भी ग्रुप स्टेजेस का मैच है, अच्छी प्रैक्टिस हो गई. एक्स्ट्रास काफ़ी ज़्यादा हुए ना. वाइड पे 2 दफ़ा हुआ है कि 2 वाइड के रन, फिर 3, 5 और आई थिंक 7 रन कम से कम एक्स्ट्रा में होंगे. तो मुझे नहीं पता यहाँ पर अगर स्कोर बोर्ड पे चौका नहीं बनता है, हार्दिक आ गया जी स्ट्राइक पे. 9 रन हुए वाइड बॉलों पे ना, तो वही इसमें स्कोर में अगर आप 9 तो नहीं, चलो 7 डाल दो
तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल भी ये फारे किस्म का प्लेयर है जडेजा, पता नहीं इन लोगों को क्यों ये फील्डिंग अच्छी कर लेता है, बॉलिंग मुनासिब कर लेता है, बैटिंग में अगेन कभी भी मुश्किल ये प्रेशर मैच जिताएगा अगर कभी इसने जिताया। मुझे नहीं लगता कभी इंडिया को इसने जिताया अभी। स्ट्रेट टू द फील्डर, रन भी नहीं लिया, क्या मैं खुद ही हिट लूँ। अगेन हिट एक ही है ब्रो, लाइक 3 बॉलों पे 6 रन, इतना कोई हिट। अगेन उसने बहुत ही अक्लमंदी की, रन नहीं भागा, बहुत ही स्मार्ट हरकत थी रन नहीं भागना। लेकिन वैसे था भी बहुत वो शॉट, नहीं विकेट भी गिर सकती थी। और दूसरा प्लेयर जो इन फॉर्म है, जो खेल रहा है तब का, वो ये है अगर कोई फिनिश करेगा तो ये करेगा। लेट्स सी, स्ट्रॉन्ग हिट, छिक्का ऑल द वे, 6 balls and that is the game. India win. No worries boys. It was good to see a competitive match between these teams. I think काफ़ी ज़्यादा one-sided हैं. Congratulations to India. They played well. Pakistan at one point in time did become favourites to win this game. I feel bowlers में अगर थोड़ा सा जो इंजरीज और फिर उसकी वजह से वाइड ज़रा डिसिप्लिन इशू वगैरह उस तरह करके हुआ, वो अगर ना होता तो इट वुड हैव बीन इवन क्लोजर मैच। बट आई थिंक जहाँ मैच आपने हारे हो वो आपने कम से कम 20 रन्स शॉर्ट थे, वो व्हाट यू शुड हैव अचीव्ड, और वो चेस करने का वो फ़ायदा हो जाता है। रिगार्डलेस स्कोर बोर्ड प्रेशर के अलावा इंडिया ने चेस किया और अच्छा चेस किया। इट्स गुड टू सी द टीम स्टिल हैव फ्रेंडली रिलेशंस। इट्स स्टिल अ प्रैक्टिस गेम इन द सेंस के आगे और गेम भी डलेगी, बट आई फील इंडिया डिड वेल, बट पाकिस्तान शुडंट बी बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत शॉर्ट बॉल। ये आखिरी चौका नहीं निकलना चाहिए ब्रो, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, बट आई थिंक पाकिस्तान शुड होल्ड देयर हेड्स हाई। Congratulations Virat, welcome back, and this was fun. Post match analysis हम मैच का बड़ा छोटा सा मैं कर दूं, मुझे नहीं लगता कोई देख रहा होगा अभी, बट अपने लिए कर दूं। पाकिस्तान was at least 20 runs short. I feel ये कोशिश में कि ज़्यादा रन करेंगे। पिच इतनी नहीं थी कि जिस पर आप उस तरह खेल सको। शॉर्ट बॉल के खिलाफ बहुत ज़्यादा विकेटें लूज़ की हमने। शुड हैव बीन एट लीस्ट 20 more runs in there. इंडियन बॉलिंग स्पेशली बहुत वीक थी। अगर कोई अच्छी बॉलिंग साइड होती उसके खिलाफ मैं कहता भी कि चलो इट वॉज डिफिकल्ट, बट इट वॉज अ वेरी सब स्टैंडर्ड एवरेज, बेसिक एवरेज किस्म की बॉलिंग थी। रन और करने चाहिए तो बैटिंग लेट डाउन किया। बॉलर्स पुट अप फाइट, शादाब बोल्ड रियली वेल, नवाज आल्सो बोल्ड रियली वेल, गॉट क्रूशियल विकेट्स। तीनों पेसर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई, तेज़ बॉल कराई, जान लगा के कराई। आई थिंक वो जो क्रैम्प्स और वो जो इंजरीज होनी शुरू हो गई थी, आई थिंक सारों की हो रही थी, उसकी वजह से भी थोड़ा सा इश्यू हुआ। बट अगेन फन गेम वेंट ऑन टिल द लास्ट ओवर। नवाज का अगेन बीच में जो वीक बॉल कराता है, दैट्स अ वीकनेस। पाकिस्तान नीड्स टू फाइंड fourth, fifth bowler like Shadab और नवाज में से, like you expect an off spinner to be very consistent with his line and length. तो नवाज का थोड़ा सा मुझे आज इशू नज़र आया, बट अगेन थोड़ा सा इट वोंट बी रॉन्ग टू से इंडियन बैटिंग थोड़ी सी एक्सपोज हुई है अगेंस्ट पेस एंड बिट ऑफ बाउंस, एंड आई थिंक द टॉस एट द एंड इतना ज़रूरी नहीं जितना वर्ल्ड कप में था, बट आई थिंक जीतने का टॉस फ़ायदा हो गया। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर watching this with us. Hope you have a great day, and inshallah we'll be back with the next